नहीं नहीं, अभी नहीं शुरू हुआ, मतलब पूछ रहा हूँ मैं आपसे बस कल। ठीक है।
ये जावेद सर
Very good morning. Uh, First of all, I am thankful to all the galaxy of intellectuals and stalwarts of Unani medicine here on behalf of Department of Tahaffuziyya Samajitib and also National Environment Science Academy, New Delhi. I welcome you all in this inaugural session of 2 days international conference on role of Unani herbal drugs in the management of lifestyle disorders. As we know that by the invent of all the antibiotics and antiviral and other drugs, we are somehow winning the battle against infectious disease. But side by side, lifestyle disorders are increasing day by day. That is why we have decided to hold this 2 days international conference to explore the ways and means through Unani system of medicine to combat such type of dreaded disease which are called as lifestyle disorders. To begin with, we start every auspicious occasion by the holy verses of Quran. For this, I request Mr. Samir to come over the dais and recite few verses of Holy Quran, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول मफ़हूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, क्या उनके मक्र फ़रेब को, उनके जाल को नाकाम नहीं कर दिया। वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदों के झुंड भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल, बस उन्हें ऐसा कर दिया जैसे वो हो गए हों खाए हुए भूसे की तरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, और अल्लाह ही का कलाम सच्चा है। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much, Samir. Ladies and gentlemen, flowers are the best way to welcome the guest, but as a tradition of Jamia Hamdard, following the norms of, we felicitate the guest with plants. And today we have especially the medicinal plants, which are very helpful to generate oxygen and very helpful to strengthen the environment of home. So, to present the plant and memento as a token of gratitude to our guest, request Honorable Vice Chancellor to please felicitate Professor Asim Ali Khan Sahab, Chief Guest of this function.
Now I request Honorable Vice Chancellor Sahab to felicitate Dr. Mukhtar Ahmed Qasmi Sahab, Advisor Unani, Ministry of Ayush. I once again request Honorable Vice Chancellor to felicitate Dr. Ram Krishna Shah from United States of America. He is running an NGO for dedicatedly for Unani medicine in US. I request Vice Chancellor Sahab to felicitate Javed Ahmed Sahab, President, National Environment Science Academy, New Delhi. I request Honorable Chief Guest of this function, Professor Asim Ali Khan Sahab, to give memento to our Dean, Professor S.M. Arif Zaidi Sahab. I request Asim Ali Khan Sahab to felicitate our Honorable Vice Chancellor, a beloved teacher of Jamia Hamdard, and a true sense pattern of this program. So, ladies and gentlemen, we are starting the proceeding of inaugural function. Any program in a faculty is not possible without the support and patronage of Dean. We have with us Dean, School of Unani Medical Education and Research, Professor S.M. Arif Zaidi Sahab. I request him to please address the gathering as a welcome address. Congratulations to Vice Chancellor Sahab. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Professor M. F. Shah Alam Sahib, Honorable Vice Chancellor, Jamia Hamdard, Professor Asim Ali Khan, Director General, CCURM, Ministry Ayush, Dr. Qasmi Sahib, Advisor, Ayush, Dr. Shah Sahib, our guest from Chicago, Professor Javed Sahib, President NISA, my friend Dr. Professor Akram Sahib, respected deans of the different departments, head of the departments, professors, my esteemed colleagues, distinguished
distinguished guests, my dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good morning. It is my privilege and pleasure to welcome you here on the occasion of International Conference on role of Unani herbal drugs in present day scenario and lifestyle disorders. We are delighted to have one and all present here, either online or offline, on this occasion of international conference. Thank you for your participation. Your presence serves as a token of appreciation and motivation for us to share knowledge and enhance our mental horizon. I am proud to announce today that Ministry of Ayush has recognized the School of Unani Medical Education and Research as a center of excellence. I am thankful to our beloved Director General Professor Asim Ali Khan and Dr. Mukhtar Kasmi Sahab for suggesting, advising, and providing every type of help to accomplish the task. At the same time, I am grateful to our Vice Chancellor for encouraging, motivating, and stand with us all the time. In the light of the benefits of traditional medicine, many Asian, African, and South American countries have allowed the development of a dual system of medical care in which individuals can choose whether they avail traditional or Western treatment. Recently, I came to know that WHO is going to open its global center in Gujarat. Professor Asim and Dr. Mukhtar Kasmi may confirm about it if I am right, to propagate the traditional system of medicine or system of Ayush. The Unani system of medicine differentiates lifestyle diseases and diseases within the context of the Asbab-e-Sitta Zaruriya. Lifestyle diseases and other diseases are caused by the imbalance in the Asbab-e-Sitta Zaruriya. This principle of medicine is one of the oldest systems of medicine, and the existence of this system till now itself is evidence of the validity of its principles. Although approximately 80% of people today depend upon herbal medication in some or other form as a component of their primary healthcare, according to the report of WHO. The herbal medicine can potentially contribute to the advancement of healthcare. Many major challenges must be overcome prior to the successful integration of herbal medicine remedies into mainstream medicines. However, the essence of any science is progress based on a continuous quest for new knowledge through research, development, and never applications. Unani medicine too should not be an exception to this system. The system needs a fresh wave of innovations to play its requisite role in the newly emerging era of medical pluralism. The rational approach to apprehend and explorate the basic concepts of the system must be regained to build a progressive future. We need to challenge assumptions, try to reinterpret meanings in modern scientific terms, and most importantly, experiment to generate fresh evidence. Indeed, for the incorporation of safe and effective herbs into the medical system to become a reality, more researchers and doctors to be trained in both modern medicine and herbal system of medicine that has been accumulated since ancient time. Additionally, to establish credibility for herbal use in the modern settings, experience-based claims from herbal medical doctors must be transformed into evidence-based claims
and standardizing treatment on the basis of pharmacology for herbs must be settled. Once these issues are resolved, the prospect exists for widespread use of herbal medicine as a safe, effective, and affordable form of healthcare. In today's time, when we are hit hard by a worldwide pandemic caused by the COVID 19 virus, the shift to the traditional way of treatment and using it as a precaution against the virus serves as a reminder about the importance of Unani medicine and various other alternative medicine. I have already told you about the establishment of the global center in Gujarat. That is the continuation of that such problem. It is my firm belief that the deliberation in this international conference will offer a right solution to meet the various health challenges that the nation is currently facing. I would like to conclude by thanking all the participants once again for being here with us. I wish everyone a successful, safe, and fruitful deliberation. Thank you very much. Thank you very much, Dean Sahib. Ladies and gentlemen, in the organization of this conference, National Environment Science Academy, New Delhi is hand in hand with the Department of Tahaffuzi Samajiti. So now I request Professor Javed Ahmed Saab, President, National Environment Science Academy, to address the gathering, please. Very good morning to you all. Honorable Vice Chancellor Sahab, Professor Afshar Alam Sahab, Professor Asim Ali Khan Sahab, Professor Zaidi Sahab, Dean Faculty of Unani Medicine, and Dr. Krishna Shah from USA, Dr. Mukhtar Qasmi Sahab, and Professor Mohammad Akram Sahab. First of all, I would like to thank Vice Chancellor Sahab for organizing this conference jointly, which is very timely, and the title of this conference is very, very relevant from every point of view, that is role of Unani herbal drugs in present day scenario and lifestyle disorders. So the theme is itself self-explanatory, and that shows the role of the Unani system of medicine. And we already know the Unani system of medicine and its lifestyle diseases and in other diseases in health sector. So from that point of view, this has been organized with the permission of the Vice Chancellor here in this faculty, with the association of the stalwarts, our Dean Sahab and organizing secretary, Professor Akram Sahab. So with these words, I will thankful to the organizers of this conference. So far the Academy is concerned, National Environmental Science Academy is a registered body, and various eminent personalities had graced the Academy as its president. The first president of the Academy was Dr. K.C. Bose, Vice Chancellor of Ranchi University, Dr. B.S. Athri, the Advisor, Ministry of Environment and Forest, and recently Dr. S.Z. Qasim was the president of the Academy till June 2015. A renowned marine scientist known for his Antarctica mission in 81-82. He also served as secretary of the Department of Ocean Development and Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia, New Delhi. So he supported this academy very much, and we flourished during his time. So I am grateful to all the ex-presidents of this academy, and very recently I am discharging this duty as a president of this great academy.
So we have various activities of this academy. The first one, that is to organize the national conference, annual conference regarding the environmental issues. Secondly, we give every scientist for recognition. And thirdly, we publish various type of journals from this academy, including the Unani journal. So I am very proud that this academy is publishing the Unani journal very regularly and with the help of the editorial board of this faculty. So this is a great achievement of this faculty from publication point of view. So the aims and objects are very relevant of this academy, that is to enhance and promote the study of the environmental sciences by encouraging students, scientists, researchers, academicians, and members of the academy for pursuing research in environment and allied areas, to set up regional centers to motivate and prepare the young scientists, young students, and their minds towards environmental issues. Environmental issues, for example, water conservation. So, water conservation is very important issue, and this university has taken up in last years the conservation of water. So, we have developed here water conservation plants and soil, air. So, to organize national and international conferences, symposia, to publish policy papers and proceedings of the journals and environmental promotional activities. So this is a small introduction of the academy and our background. And lastly, I would like to congratulate all the delegates, because we have received near about 100 accepts for this 2 days international conference. So I am grateful to the contributors, to the delegates who are participating in this 2 days international conference. We will publish this report. Today I think we will, we will release the CD. So due to short of time, we could not publish this proceeding. So inshallah, the proceedings of the abstract will be published if time permits. So broad themes are very relevant, the present health scenario potentials of the Unani medicine. So we have no doubt in the potential of the Unani herbal drugs. For example, I would like to mention in the hall the first plant mentioned by that is Ravalfia serpentina. So Ravalfia serpentina was a very plant which was studied and researched by Dr. Salimuzzaman Siddiqui, the organic chemist in the time of Ajmal Khan. So same legacy was maintained on the research of plants by Hakim Abdul Hamid Saab, the founder of this university, because he studied various plants, various medicinal plants for Unani purposes, and he developed various formulations, including the Amimajas. He selected Amimajas plant for leukoderma, for skin diseases. The Professor M.S. Khan used to work on this plant because it was very near to Hakim Abdul Hamid. Amimajas, we used to cultivate this plant in the herbal garden. So there is a very long history of these medicinal plants. So far, the establishment of this university is concerned, and I have great association with this faculty because I was teaching in this university for about 10 years, Vice Chancellor. From 80 to 89, I used to take class of botany of breathing here. So very good association I developed with this faculty. Hakim Jamil Saab was there, and we worked together jointly with zeal and zest for the development of this Unani faculty. And Unani has a big role now because healthcare system is very important. Now, it is a very easy approach. I mean, from that point of view, it is not costly treatment and very safe and everything. And various aspects are there which are very prominent and unique in this system. For example, dietotherapy.
So dietotherapy is a very important area in which the excellent work can be done by the physicians, and the medicinal plants are there which can be evaluated from their activities, from their action point of view, maybe from antibacterial, antiviral, or other type of activities or active compounds we can isolate from these medicinal plants. So from that point of view, I have all good wishes for this great conference. And now I would like to announce the award to Honorable Vice Chancellor from National Environmental Science Academy, Excellence Education Award to Professor Afshar Alam Saab, because the university is progressing year by year. Year by year, the university is progressing, because I am witness of that day when this Unani College was shifted from Gali Qasim Jan to this place. So it was in 1970 when this. So in this way, this was added, and various other. So from that point of view, I honor Honorable Vice Chancellor, sir. So now I would like to honor the organizing secretary, Professor Mohammad Akram Saab, who has done tremendous job for this conference. So these words, I again thank everyone who is in the hall, and especially the foreign delegates, Professor Krishna Shah Saab from USA. Thank you very much, and I would like to present one copy of Unani Journal, which is published from the National Environmental Science Academy, to him as a gift. So thank you very much. Thank you very much, Professor Javed Ahmed Saab, for enlightening us about the NESA and its relation with the School of Unani Medicine, and your personal relation with the Jamia Hamdard, and also to the students of Unani. Ladies and gentlemen, this conference was not possible without having our guest of honor, Dr. Mukhtar Ahmed Qasmi Saab. He needs no introduction. He is advisor Unani in Ministry of Ayush, Government of India, alumni of ICUM University, and big brother of mine. He was very busy in his March ending schedules. He himself was supposed to chair a scientific committee there today itself, but he preferred to come here. I am very much thankful to him for gracing the occasion. I request Mukhtar Ahmed Qasmi Saab to enlighten the audience with his. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद प्रोफेसर डॉक्टर एम अफशार आलम साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर जामिया हमदर्द, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर आसिम अली खान साहब, DG CCRUM, प्रोफेसर
Arif Zaidi Sahab, Dean Faculty of Unani Medicine, Professor M.A. Jafri Sahab, Professor Suhail Fatma Sahiba, Professor Said Ahmad Sahab, Professor Javed Ahmad Sahab, Dr. Krishna Shah Sahab, distinguished delegates, friends from media, ladies and gentlemen, good morning and Assalamu alaikum. I am delighted to be present here and I am very thankful to organizers that they have invited me to attend the international conference being organized by Department of Tahfuzi Samaji Tib, School of Unani Medicine, Jamia Hamdard, New Delhi. Friends, as you know, that the numerous lifestyle diseases, their mode of appearance, methods of prevention, their treatment, complications, as well as to prevent their recurrence, have been elaborated in ancient Unani texts, which are being practiced equally effectively in today's era. Thus, Unani medicine has overarched encompassing everyone's life, including the approach of one health. Most of us follow traditional medicine knowingly or unknowingly on some or the other occasion in our life. It is the wisdom developed from the observations, experimentations, and the practices over the thousands of years, which are documented in coded form. The result of these interventions are reproducible, can be documented and analyzed in scientific manner. Like the principle of medicine or basic sciences are the same all over the world, the principles of traditional medicine are also identical across the world. There could be some there could be some differences in their formulations or other interventions depending upon the local flora. These differences are also gradually phasing out owing to global trade of medicinal herbs and their formulations. The Sustainable Development Goals set in 2015 by the United Nations General Assembly are blueprint to achieve the better and more sustainable future for all. The traditional system of medicine through their fundamental principles are simple as well as safe, multidimensional interventions have immense potential in achieving sustainable development goals. Considering the growing acceptance worldwide for the integrative medicine by integrating practices of traditional system of medicine with the conventional medicine way the privilege to leading the world in the field of integrative medicine. High level science is embedded in the principle and practices of Unani system of medicine like Mizaj and Akhlaq. Early individuals the different from the another, therefore their responses to the medicine or other stimuli differs from the person to person. This phenomena was described by the Unani physicians thousands years ago under the concept of mizaj, which was later supported by the advanced knowledge of genome. Other concepts like multi-molecule, multi-target drug delivery system are highly advanced concepts which are being understood and are being adopted gradually as the modern basic sciences evolve in their tools and techniques. Friends, world knows the most modern drugs, including anti-cancer, chemo drugs, stents, etc., are developed out the traditional knowledge of medicinal plants and their usage. It is of the prime importance for us to work together to integrate modern science with the codified system of traditional medicine, not just to validate that science
their scientific sanctity, but traditional medicine also the understood the reasoning behind the principle and practices of traditional medicine. This should help the scientific community to achieve the challenges like antimicrobial resistance, growing incidence of age-related disorders, non-communicable diseases, as well as to achieve the objective like tuberculosis-free world. At the end, I once again extend warm welcome to all the dignitaries, experts, and participants. दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस जो लाइफ स्टाइल डिजीज पे डॉक्टर अकरम ने ऑर्गेनाइज किया है, मुझे बेइंतहा खुशी और मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर का बेहद ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। ये जामिया हमदर्द की हिस्ट्री में शायद पहला मौका है, जैसा कि आरिफ जद्दी साहब ने बताया, कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 10 करोड़ की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जामिया हमदर्द को समर्पित किया है। और ये हकीकत है कि दिल्ली में, चाहे वो किसी सिस्टम का, मैं यूनानी सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, कि जामिया हमदर्द को मिनिस्ट्री चाहती है कि एक जैसे और सिस्टम का शोकेसिंग होता है कि कोई भी बाहर से किसी भी कंट्री का कोई आए, तो हम चाहते हैं कि यूनानी सिस्टम क्या है वो जामिया हमदर्द को एक शोकेसिंग के तौर पर ये प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हमारे पास इस वक्त यूनानी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम किसी फॉरेन डेलीगेट्स को, किसी को ये जाके बता सके कि एक्चुअल में यूनानी है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये जो रिजीम है इसमें बहुत ही फराखदिली के साथ गवर्नमेंट ने तकरीबन 400 करोड़ रुपया खर्च करके सिर्फ 2 साल की मुद्दत में NIM गाजियाबाद डेवलप किया है। आप कभी जाएं और देखें कि वाकई एक तरह से यूनानी का एक ताजमहल लगता है। हर फैसिलिटीज़ वहाँ पे बनाई गई है, मतलब उसमें आपको जो है हॉस्पिटल, एकेडमिक ब्लॉक और गेस्ट हाउस, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल सब एक साथ बनना जो है ये आसान काम नहीं था, बगैर जो है प्रेजेंट रिजीम की मदद के बगैर। मेरा अपना जो है एक अंदर से मेरी एक तमन्ना होती है कि जब हमदर्द के कैंपस में मैं आता हूँ तो मुझे अजब सी फीलिंग होती है। मैं चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन को हम इस तरह डेवलप करें, हमारे फैकल्टी मेंबर्स इस तरह लगे कि वाकई हर चीज़ का, जैसे हम बार बार कहते हैं कि रेजिमेंटल थेरेपी या जो है इलाज भी तदबीर, तो इलाज भी तदबीर हर जगह से जो है ना आपको व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पे नज़र आएगा। कहने के लिए बहुत सारी बातें लोग करेंगे, लेकिन SOP डेवलप करके एक हमदर्द को चाहिए, लीड लेना चाहिए कि एक्चुअल में रेजिमेंटल थेरेपी जिसको कहते हैं या इलाज में तदबीर, ये उसका जो है ये मेन मॉडल है जिस पे पूरे हिंदुस्तान को अमल करना चाहिए। मतलब अलग अलग जगहों पे आप जाएंगे तो कोई जो है कपिंग कर रहा है, कोई सर पे कर रहा है, कोई पीठ पे कर रहा है, मतलब कोई भी उसका जो है एक तरह से साइंटिफिक पैरामीटर नहीं है, जिसको देखिए कुछ ना कुछ अपना इंटरवेंशन और एक से एक क्लेम करते हैं। तो ये जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसमें कुछ गोल सेट किए गए हैं, टारगेट सेट किए गए हैं। वो टारगेट हमें हर हाल में अचीव करना है और जितनी जल्दी हो बिफोर टाइम अचीव करना है। अगर इसमें कमी हुई तो फिर नेक्स्ट ग्रांट में भी प्रॉब्लम आएगी। तो वाइस चांसलर साहब से और जो इसके PI हैं डॉक्टर शहीद साहब और उनकी पूरी टीम, आरिफ जैदी साहब, डॉक्टर अनवर साहब या डॉक्टर हबीब कबीर, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये समझ करके इस काम को करें कि एक तरह हमको जो है जामिया हमदर्द को एक इस तरह बनाना है कि एकदम वाकई अगर इसका नाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो नाम का एक्सीलेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के नाम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता।
तो हम सही मानों में इसको एक्सीलेंट देखना चाहते हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि हमदर्द एक शोकेसिंग इंस्टीट्यूट हो और जिसको हम हर जगह ला करके दिखा सकें कि ये हमारा हॉस्पिटल है, ये हमारा जो इलाज में तदबीर है, ये हम जो है लाइफ स्टाइल डिजीजेस का जो है ये इलाज करते हैं। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज है। अगर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, तो दूसरी तरफ हमारा एक चैलेंज भी है। चैलेंज ये है कि इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए जो है हमदर्द का एक नाम रोशन होना चाहिए, और इस तरह होना चाहिए कि हम यूनानी का एक ऐसा जो है सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल बनेगा। आए दिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दूसरे मिनिस्ट्री के लोग पूछते रहते हैं कि यूनानी में बेहतर इलाज कहाँ होगा। आप अगर यूनानी की तरक्की देखना चाहें तो मुझे लगता है कि इदारे हमारे लगभग 57-58 तो बन गए हैं, वहाँ से स्टूडेंट भी पास आउट होकर निकलते हैं। लेकिन आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर कोई ये कहता था कि यूनानी का इलाज मुझे करना है, तो लोग बहुत आसानी से अपने आप अपना डेस्टिनेशन तय करके उस हकीम के पास चले जाते थे। हमारे एक सीनियर मिनिस्ट्री में जो है ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, शायद ही कोई ऐसा फंक्शन, कोई भी हम लोगों का कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता था जिसमें हमारे इलाके के हकीम साहब बुलाए ना जाते हों। उनके बगैर वो फंक्शन पूरा नहीं होता था, उनके आए बगैर लोग जो है उनके अपने रिचुअल्स पूरे नहीं होते थे। आज वो हकीम कहाँ है? कहीं भी नजर नहीं आते। हिंदुस्तान में आप जो है किसी भी शहर में जो मेट्रोज है, भोपाल है, हैदराबाद है, आप देखेंगे नाम के लिए तो कोई डीन हो गया, कोई जो कोई कुछ हो गया, एडवाइजर हो गया, जो कुछ हो गया। पर्सनल तरक्की तो हम लोगों की बहुत हो गई, लेकिन सिस्टम कहाँ है? सिस्टम को ढूंढने के लिए मुझे लगता है कहीं नहीं मिला। तो हमारे तलबा जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि जो है अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। चैलेंजेस हैं, मैं मानता हूँ, उस पर अगर बहस करने के लिए हम शुरू करें तो बहुत काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे पता है क्या चैलेंजेस है। गवर्नमेंट में आके आदमी लंबी लंबी बातें करता है, सर्विस में आकर के सोचता है कि बहुत आसान है, लेकिन वो चैलेंजेस है, उसको जो है करते हुए भी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन यूनानी दिखनी चाहिए, यूनानी नहीं दिखती है, कहीं भी नहीं दिखती, पूरी दिल्ली में कहीं नहीं दिखती, पूरे जो है हैदराबाद में नहीं दिखती। तो पहले दिखती थी, पहले लोग जो है मर्जा खलाइक होते थे, लोग पहुंचते थे, वहाँ जाते थे और हम बाकायदा बताते थे कि फला जगह चले जाओ, आपका ट्रीटमेंट होगा। मुझे लगता है मेरी बात बहुत लंबी हो रही है, बहुत टाइम टू टाइम प्रोग्राम जो है ये, तो इस वजह से अपनी बात को ही ख़त्म करता हूँ। दोबारा मैं वाइस चांसलर साहब का बेइंतहा ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। और वाइस चांसलर साहब को मैं पिछले 25-30 साल से जानता हूँ, हम लोग ड्यूटी सोसाइटी में जो है काम करते थे, तो अच्छा हमारा इंटरेक्शन रहा है। तो इंशाल्लाह मैं इनके टच में रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसमें जो चीज़ें दुश्वारियाँ आएंगी उसको दूर किया जाएगा। हमारे डॉक्टर आसिफ अली खान साहब बहुत डायनेमिक हैं और माशाल्लाह जो है इनकी वजह से एक वक़ार है यूनानी का, और वो बाकी रहेगा और सब चीज़ें इंशाल्लाह होंगी। एक बार दोबारा मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you very much, Dr. Mukhtar Ahmed Qasmi साहब, for enlightening us with words of wisdom. और दिल से बात करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। Ladies and gentlemen, earlier we were planning to have a national conference, but our Vice Chancellor साहब encouraged us to hold international conference, and by his support and patronage, we were able to invite delegates and keynote speakers from various countries. And we have with us Claudia Prekel from Germany, Dr. Raisuddin from Sri Lanka, Dr. Mujahidi from Iran, Dr. Danish Ahmed from World Health Organization, Geneva, and Ram Krishna Shah from United States of America. So we are fortunate enough to have Ram Krishna Shah with us. He is a nutritionist by profession,
but he is working for Unani Medicine. This is a tremendous job he is doing in United States of America. I request Dr. Shah to come over the dais and share few words. सबसे पहले तो मैं अकरम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम यूनानी के आदमी नहीं हैं, लेकिन यूनानी हमको इतना दिया है जिसको हम जितना भी प्रशंसा करेंगे तो कम होगा। एक कहावत है, पोथी पढ़ी पढ़ी अगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। हमें यूनानी शब्द से आज यूनानी में लगे। हम 2014 में सोचे यूनानी को तो सब प्रोफेशनल बना के रखा है, तो क्यों ना हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना पाए। और हमने शिकागो जैसे जगह में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूनानी के लिए हम गए। स्टेट कहना नहीं, ये कुछ नहीं है, ये नहीं होगा। आप मुस्लिम हैं, देखिए दवा कोई मुस्लिम नहीं होता और हिंदू नहीं होता है और न क्रिश्चियन होता है, दवा दवा होता है। और हमने वहाँ पर ग्लोबल यूनानी मेडिसिन एंड रिसर्च फाउंडेशन खोले। फिर WHO में हमने इस साल बुक कर लिया है कि वहाँ पर यूनानी मेडिसिन का हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमने 2 साल बुक किए, लेकिन क्या हुआ, कोरोना वायरस के चलते कुछ नहीं हुआ। तो जब कहा जाता है ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, आपका यदि इच्छा अच्छा हो और आपका मेहनत अच्छा हो तो आप लोग कर सकते हैं। हम लोग वर्ष में 12 महीना होता है और हम 14 कॉन्फ्रेंस करते हैं यूनाइटेड नेशन में यूनानी का। और इससे मुझे प्रेरणा क्या मिला, मेरा 17 पब्लिकेशन, और इसे और यही सबसे हम WHO अभी यूनाइटेड नेशन के अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, यूनानी मेडिसिन का ही देन है। स्टेट काउंसिल मेंबर है इलिनॉय स्टेट का, इसी का देन है। तो हमने इसे पॉजिटिव मोड में ले गए। हम कभी नहीं सोचे कि मेडिसिन है, दवा हमारे भगवान है, दवा हमारे गॉड है। इस तरह से हम लोग व्यवहार में जाएं। और मेरा सबसे बड़ी बात है कि आज जितने हमारे सर हैं, हम नाम नहीं ले पाए, शुरू में कर दिए स्टार्टिंग। अब थोड़ा हम टेक्निकल लोग हैं, तो इसलिए जो है हम आसिम साहब के बहुत सुनते तक हैं। पहले बार वो जब बोल रहे थे यूनानी मेडिसिन में, तो हम सुनते रह गए, तो मेरे समझ में नहीं आया बहुत बार। फिर हमारे आलम साहब कितने अच्छे हैं, आरिफ साहब और कासिम साहब के तो बहुत शुभचिंतक है। उन्होंने हमेशा कहा कि यूनानी, जब यूनानी स्टेट में जब गए थे, इन्वेस्टर से बात किए तो कहा नहीं, आप आयुर्वेदिक कीजिए, हम आपको अभी ग्रांट देते हैं, आप योगा पर कीजिए, अभी ग्रांट देते हैं, यूनानी मेडिसिन में आपको नहीं देंगे। हम कहें यूनानी मेडिसिन में आप क्यों नहीं देंगे। और लड़ते लड़ते आज कह रहा है, वही फोन करके कि आप जो है यूनानी का कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इन्वेस्टर कह रहा है। तो क्या है कि आप यदि सही ढंग से, और यहाँ के हमें बहुत जावेद सर कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, जब हम इनसे मिले तो ऐसे हम लोगों में बहुत सारे लोग हैं और सभी के साथ हम लोग साथ चलेंगे। क्योंकि अब बहुत खुशी की बात आप और सुना रहे हैं, आप लोगों का भी चांस है इसमें जो हम अभी करने जा रहे हैं। 2 घंटा 30 मिनट का यूनानी मेडिसिन का फिल्म बना रहे हैं आप लोगों में से, और आसिम साहब का कास्टिंग में ही शुरू में है उसका यूनानी मेडिसिन का रोल रखते हैं। और आप लोगों में से जो भी यूनानी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्योंकि आजकल जो है ना, आपका कहानी आपके फ्यूचर के बारे में बताता है। और इसका शूटिंग हम लोग जो वहाँ से शुरू किए हैं जहाँ से यूनानी मेडिसिन का ओरिजिन हुआ है। तो ये है, आप लोगों में से भी कोई डॉक्टर साहब, कोई हमारे शुभचिंतक कहते हैं कि हम भी यूनानी मेडिसिन में कुछ बोलेंगे, हम रिसर्च इस तरह से किए हैं। तो ये जो है, यदि आप लोग करना चाहेंगे तो हमें याद करें, हम आपके साथ हैं। और जेनेवा में जो हम लोग का यूनानी का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो अकरम डॉक्टर साहब से संपर्क रखें। हम तो यहाँ शायद 4-5 आदमी को ही जानते हैं, 5-6 आदमी को जानते हैं। तो ये मेरा पहले बार है यूनानी कॉन्फ्रेंस में, 14 से लेके आज पहले बार। आसिम साहब तो कई बार हमको इन्वाइट किए, लेकिन कभी कोरोना वायरस, तो कभी क्या, कभी हम लोग का जनरल असेंबली, तो कभी ये सब पड़ा है। तो बहुत खुशी लगा और आपने इतना सम्मानित किए हैं, तो हमको लगा कि हमने
14 से लेकर अभी तक यूनानी मेडिसिन पे कुछ किए हैं तो सम्मान मिला। तो और ये सब जो है आप लोग की आशीर्वाद है, आप लोगों की देन है, इसीलिए आप लोगों से भी करते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक, किताब पढ़ के कुछ नहीं होगा, आपके इनर फीलिंग। आप ये सोचिए यूनानी, हम एक हिंदू है, लेकिन हम हिंदू होते हुए 10 वर्ष से यूनानी का झंडा बोल के यूनाइटेड नेशन में WHO में जा रहे हैं। कई आदमी हमको इंडोनेशिया में जब हम यूनानी कॉन्फ्रेंस किए तो कहता है ये तो इस्लामिक मेडिसिन है, यू आर मुस्लिम। हम पे देख उसको बोले, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को बोले, हम लोग साथी थे कि बेंच में हम लोग खा रहे थे, गवर्नमेंट में यूनानी मेडिसिन क्या है कहा, तो कहा कि आप क्या है यूनानी मेडिसिन पे। और इंडोनेशिया का वाइस प्रेसिडेंट है, इंडोनेशिया कितना बड़ा कंट्री है, तो उसको समझा ये तो बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन हम लोग तो इसको इंडोनेशिया में इस्लामिक मेडिसिन बोलते हैं। तो हम यहाँ भी कई लोग से बोले हैं क्योंकि ये मेडिसिन है। आप क्लिनिक हिंदू एरिया में क्यों नहीं खोलते हैं, आप क्लिनिक क्रिश्चियन एरिया में क्यों ना खोलते हैं, तब ये होगा। हम हिंदू हो के आज हम यूनाइटेड नेशन में, हम 2006 से यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट के काउंसिल मेंबर हैं, हर जगह बोलते हैं यूनानी मेडिसिन को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लोग हो रहा है। आप अपने बाप दादा अपने खानदान के बारे में नहीं कहेंगे तो लोग कोई नहीं पता चलेगा। आप यूनानी मेडिसिन को इस तरह से भूलते जाएंगे तो 10 वर्ष के बाद यूनानी मेडिसिन रहेगा ही नहीं, अपने में झगड़ेंगे, अपने में लड़ेंगे। तो इससे तो कुछ नहीं। हम आलम साहब का बात एक तो बबी भरकर आलम साहब बोले थे कि यूनानी मेडिसिन इस तरह का कॉम्प्लिकेशन है, वास्तव में है उस तरह का, लेकिन हर सिस्टम में प्रॉब्लम है, एक ही सिस्टम में नहीं है। आप कोई भी सिस्टम में जाइए, आयुर्वेदिक में जाइए, एलोपैथिक में जाइए, यूनानी, लेकिन प्रॉब्लम को हम लोग टेबल टॉक करके सॉल्व करना है। तो आज ये टाइम तो 10 मिनट था और आप लोगों से टाइम ज़्यादा ले लिए, तो पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जो मेरा फीलिंग है आप लोगों भी यूनानी को अपने दिल से ले, पैसा से नहीं ले। आजकल क्या करता है, हम सुने अब कहाँ तक सत्यवाद है। हम इजिप्ट टीवी में एक इंटरव्यू दिया, मेरा साहब जो है जी हैं जो बैठे थे, क्वेश्चन आया कि यूनानी वाला डॉक्टर जो एलोपैथी का पाउडर बना करके देता है इस तरह से, एक आदमी पूछा हमसे इंटरव्यू, हम कहीं इसके बारे में हम नहीं जानते। तो जो सिस्टम है उस पर आप लोग लग जाए। ऐसा नहीं है कि आदमी बिगाड़ने के लिए गलत बोलता होगा, यदि वो है तो उसको आप करेक्शन करें, सिस्टम के साथ जाए, सिस्टम के साथ कोई धोखा नहीं करे। हम यूनानी नहीं जानते। हम देखिए PhD न्यूट्रिशन भी किया हमारे मुल्क में, जब हम हेल्थ मिनिस्ट्री के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के चीफ थे, और उस समय हमदर्द आया था, हमदर्द कंपनी का, तो हमको इन्वाइट किया था। तो उस समय हम लोग ऐसे, अब हम आयुर्वेदिक में जाएंगे कुछ नहीं कर सकेंगे, एलोपैथी में जाएंगे कुछ नहीं कर सकेंगे, क्यों हम यूनानी पकड़े। आज यूनानी को पकड़ के हम यहाँ तक पहुँच गए और आप लोगों के साथ सम्मान भी मिला है। आप लोगों से शायद इसमें से कई 99% लोग हमको जानते नहीं होंगे। तो क्या है कि 10 वर्ष तक हम मेहनत किए, एक हिंदू होकर यूनानी मेडिसिन का किताब लिखी, दूसरा मेरा इम्पैक्ट यूनानी मेडिसिन का आ रहा है। तो ये सब जो है हम लोग करें। और आप लोगों से अनुरोध है, हम लोग का जनरल असेंबली हो रहा है, जनरल असेंबली में हम लोग यूनाइटेड UN में हम लोग कॉन्फ्रेंस करना है। आप लोग कोई भी भाग लेना चाहें तो आप संपर्क रखें अकरम साहब से। और यहाँ जितने भी सब जब मंच में बैठे हैं सब सर को हम अच्छा से जानते हैं, सब मेरे रिस्पेक्टेड सर सब हैं, और ऐसे करके भी हम लोग रहेंगे, हाथ में हाथ मिला के चलेंगे, एक दूसरों को साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे। जब हम कहेंगे हम बड़े आदमी हैं, हम तो वाइस चांसलर है, हम तो ये है, हम तो डीन है, तो फिर आप वहीं तक रहेंगे, उसी यूनिवर्सिटी तक आप रहेंगे। जब यूनिवर्सिटी जब बाहर आप निकलिए, ये संसार बहुत बड़ा है, तो इसीलिए जितने भी हमारे सर हैं उसको आपके भीतर का जो मैं है उसको आप बड़ा बनाइए, छोटा नहीं रखिए। आप किसी को क्रिटिसाइज करने का क्षमता बनाइए। यहाँ पर यूनानी वाले जो एक दूसरे को सुनना नहीं चाहता, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे आप लिखेंगे। तो यूनानी जो है हमें इतना दिया है, वर्ल्ड वाइड आज यूनानी जो है 100 कंट्री घुमाया, हम 100 कंट्री हम यूनानी के तौर तरीका से घूमे। अभी 10 कंट्री का मेरा प्रोग्राम है। और अकरम डॉक्टर साहब एक ऐसे लोग हैं कि हमारे बुद्धा इंटरनेशनल टीवी है, उस टीवी में शुरू से आज तक वो भाग ले रहे हैं।
बाकी तो कई यूनानी में ये आदमी ठीक नहीं है, आया भाग के चला गया, कोई आया चिल्ला के चला गया, भाई हम लोग यूनानी के एक्सपर्ट है, आप लोग क्या है। कई आदमी ऐसा भी हुआ, लेकिन ये बेचारे डॉक्टर साहब जो है शुरू से अंत तक हमेशा हमारे टीवी में यूनानी के बारे में बोलता रहा। हम लोग बोले कि इस बार भी कहा कि डॉक्टर साहब आइए, हम लोग आपको जो है कल कह रहे थे कि आपको मंच पर बैठाने जा रहे हैं, आप टेबल पर बैठाइए, बेंच के नीचे बैठाइए, फर्श पर बैठाइए, कहीं भी बैठाइए, हम बैठने के लिए तैयार है। क्योंकि बैठना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके भीतर का फीलिंग क्या है, आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, आप जो है अपने कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो आप करेंगे। तो यूनानी मेडिसिन आप ब्रांड के साथ करें, आप लोग हमें साथ मिलकर करें, और देखिए 1 साल के भीतर में ये WHO से अप्रूव करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो हम थोड़ा सा परिचय अपना देना छोड़ दिए थे। मेरा नाम रामकृष्ण शाह है और हम यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव, कभी भी आपको यूएन में जाना हो तो अभी याद करें, और वहाँ के स्टेट के इलिनॉय स्टेट के काउंसिल मेंबर हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ग्लोबल पीस एंड हेल्थ इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट है, और हम लोग अभी वर्ल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, जिसको हम लोग वाइस चांसलर बोलते हैं, वो भी हम हैं। तो अभी हम वहाँ पर यूनानी का सब्जेक्ट PhD डिप्लोमा सब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी आप लोग पढ़ने के लिए चाहेंगे, कोई ट्रेनिंग लेने के चाहें तो हम याद करें, अगर हम डॉक्टर साहब को याद करें, और हम लोग जो इस तरह से छोटा छोटा काम करते जा रहे हैं, और ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग का ये स्नेह है, आप लोग का प्यार है। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, हिंदी में बात करने के लिए और दिल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। और वी विल हैव अनदर डिस्कशन विद शाह साहब इन साइंटिफिक सेशन। तो डॉक्टर आसिम अली खान साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन इन जामिया हमदर्द। He is presently Director General of Central Council for Research in Unani Medicine, Professor of Unani in Department of Maulijat, Jamia Hamdard, and in a true sense, Alam Bardar of Unani Medicine. So I request you, sir, to enlighten us with your wisdom. Thank you very much. Assalamu alaikum and a very good morning. Very respected Honorable Professor Dr. M. Shah Alam Sahib, the Honorable Vice Chancellor of Jamia Hamdard. My colleague Dr. M. Qasim Sahib, Advisor Unani Ministry of Health, Government of India. Our friend Dr. Ramkrishna Shah Sahib, who is the President of Global Unani Medicine Research Foundation, we're listening to him. Professor Javed Sahib, who is the President HISA, Dean Unani Medicine, Professor Zedi, Dr. Akram, the Organizing Secretary, Jafri Sahib, Dr. Suhail Sahiba, Suhail Parvez Sahib, Shibu Sahib, Dr. Mohsin Dehli, distinguished faculty members, national and international delegates, and dear students. It's indeed a very great honor for me to be here today in this international conference on a very relevant topic, role of Unani herbal drugs in prison-day scenario and lifestyle disorders. I must congratulate the Department of Tahaffuz-e-Samaj-e-Tib, School of Unani Medical Education Research, Jamia Hamdard, for organizing this international conference in this hybrid mode in collaboration with National Environment Science Academy. I also take this opportunity to pay my homage to the legion philanthropist, educationist, and a great king, a Padma Shri and a Padma Bhushan, the founder of this university, Hakim Abdul Hamid Sahib, Marhum Mahfoor, for his vision and achievements, whatever we are seeing today, his untiring efforts of Hakim Abdul Hamid Sahib, Marhum Mahfoor. Equally, having the gratitude and my thanks and submissions to the current leadership, Chancellor of this university, Janab Hamad Ahmad Sahib, for his leadership, for his hand-holding and guidance for this university. I'm very thankful to Honorable Vice Chancellor Sahib
Janaab Abshar Sahib and the organizing team to invite me on this occasion. Recently also I have been in Jami Hamdard in some function otherwise also. What I'm observing before I go into the conference, let me start it with that. We have a wonderful opportunity as a Unani fraternity, particularly in this university, along with other first and sciences, that we have a leadership of Professor Abshar Sahib. He's a man from within, and he is, we all know, an employee friendly, student friendly, research friendly, academics friendly. I have been having interactions with Professor Abshar Sahib when he took as Vice Chancellor. Many situations came in Jamia Hamdard in the recent past. Usually what happens is with the leadership is having so many complex works to do, and he doesn't have specific time for one particular thing to focus on. What I am observing, because I am from Jamia Hamdard and I knew, and through various sources I come to know that what kind of issues and concerns are happening in different faculties at government level or UGC level or many other things. And every single facet, every single aspect, I have been seeing his dedication and commitment and personal involvement. Particularly recently, the Unani system of medicine, when we passed through some kind of turbulences recently, and I saw his dedication and commitment. He was ever ready to just be anywhere to meet anybody at any time for any reason. And that dedication moves you. And that gives you also a motivation that no, you should go forward and try as best as possible you could do. This is his skills and leadership, but this is an opportunity for the people who are here, that we shall take advantage of this leadership and take benefit to grow. We were sitting in the VIP lounge there before this function, and he was discussing and guiding the dean of the SUMAC. I think all the points were very relevant. I think we shall leave things behind and move forward. And this is a wonderful opportunity. As far as the government of India is concerned, n number of facilities are available. This leadership of Honorable Prime Minister Modi Sahib, our Honorable both Ministers Sonowal Sahib and Mahendra Bhai Ji, our very Honorable Secretary Rajesh Kotesha Sahib and Pramod Kumar Pathak Sahib, Advisor Unani. What not is happening in Ayush sector, particularly since it has become a ministry in 2014 and thanks to Honorable Modi Sahib, our Honorable Prime Minister Sahib. We are the insiders from the ministry. Maybe from outside, and sometimes we feel that there is a communication gap. The people who are the stakeholders, sometimes probably they are not able to receive what exactly is happening in Ayush sector and Unani sector as well, particularly. I think that gap has to be bridged. And these are the platforms, and that's why I'm very thankful to the Honorable Vice Chancellor Sahib and the organizing team, his organizing team, to provide this opportunity, the advisor or to other people from the ministry or me as DG, to interact with the stakeholders. This is an international conference. People listen. And a number of things are happening. Every day, trust my words, despite our best efforts, it's very difficult to keep the pace and to meet the pace which the Ayush leadership at the ministry at the moment has. Hundreds of initiatives every day are happening. It's really difficult to get the pace. We are in a hurry. We're in a hurry to grow, to groom, to nurture ourselves and other people in the country and across the globe. It's not only national, that we are opening national institutions, we are opening universities, we are opening center of excellences. We are also growing extra beyond the borders. N number of countries, we have opened centers in embassies where Ayush information cells we call them. N number of countries are there. All our ambassadors are, respected excellencies are there who are giving the leadership. Last time, because of this, we could do one Unani Day function in the British Parliament. We could do that. Yes, that was done last year before last. We have very good leadership other than what the government is doing in the name of manufacturing organizations and different organizations. Mostly Delhi are very active. Amit Sahib is very active.
and they are doing a wonderful job. Recently, he did one function in Kerala, and I did celebration, and I came to know I was supposed to go incidentally because of some urgent work, piece of work to go there. But a wonderful function was done. This time we also came out, we were doing our functions in a very grand level in the Gyan Bhavan, where almost 1,200, 1,300 people from different parts of the country and globe used to call. This time we were discussing with the Honorable Minister, Sonowal Sahib, and Secretary Sahib, and we planned it that let's go out and let's tell the people the gap which I was talking, that the people should know what is happening in Unani and what's happening in Ayush sector. And we went to Kashmir. This time the Unani Day celebration was done in Kashmir, in Srinagar. There's a wonderful hall in Convention Hall, SKICC, Sri Kashmir Institute of Convention Hall is there in Dal. Almost 600, 700 people were invited. It was a wonderful function, both the ministers, and you can see the interest of the government that I requested both the ministers. Despite the parliament session was just on head, and with my request, all the ministry officials were there. They simply went there, despite all the busy schedule, they just touched, did it, and immediately came back. I was requesting Honorable Governor Sahib there, he was busy with Honorable Prime Minister Sahib, he was in Banaras, and later he got sick. He got some upper respiratory infection, that's why he couldn't join. I was requesting all the chief secretaries and additional chief secretaries of medical education. And you know, he was in Delhi, and when I requested him, he said, you have to come. It's a Unani function, and he was so kind enough. He said, I'll try my level best to reach. And he said, before 12, I'm not able to reach because of the flights. And you know, later on, he took a chopper. He took a helicopter to fly from here, and he reached there. So this is the love and support and care how the people are doing for the Unani system of medicine. Kasmi Sahib was speaking about the Center of Excellence for Jamia Hamdard. With great difficulty, I congratulate Honorable Vice Chancellor Sahib for this, that within no time, we discussed and he guided, he handholded, he called the meetings in his office many times of the stakeholders from here, and he took out time to take them into his office and guided them on how to do. Many frictions were there, hurdles were there, which he removed personally, whether this was the finance, whether this was UCs. And with this UCs, I also request that when we take the project from the government or any funding agency, this is our duty to do the work and also to give back the utilization certificates in time. We find very much difficulties, I mean, particularly the Honorable Vice Chancellor and Said Sahib and others and Rais Sahib. It was a very difficult time for them. And finally, we could go through this. And now the Center of Excellence with us, as Kasmi Sahib was telling, that it should be really a wonderful Center of Excellence. It should not be just for namesake. And it's not the only thing. Many people in the country, they are keeping an eye on Jamia Hamdard. Trust my words, because we keep on discussing with stakeholders and leaderships, stalwarts. They are seeing this as a center of excellence, not only in this particular, but otherwise as a general center of excellence. So people watch you. People are silent observers. They're seeing how we are working, how we are doing it. A gehwara hai. So please take cognizance of it. Take advantage of the leadership. Take advantage of the opportunities available, what the government is providing, so that we shall be proactively doing that. As Mr. was talking about, that it is a matter of great pride and honor for all of us in our country, that despite there are many people in the world, like you can see the traditional medicine in China, how strong they are. But you know, this is thanks to Honorable Prime Minister Modi Sahib, and I mean it, thanks to our Honorable Minister Sahib, and thanks to Honorable Secretary Ayush, Sahib, that World Global Traditional Medicine Center has been brought to India. It's not a joke, it's a very big thing. All World's Traditional Medicine Center, Global Center, is now in India. Jamnagar has been identified for that, and 21st of April, hopefully, Honorable Prime Minister Sahib is coming there to inaugurate. Director General of WHO is coming, along with many other dignitaries from different parts of the world. After that, we also have our global Ayush Investment and Innovation Summit in Ahmedabad. That is from 21st is this, and 22nd to 24th is that summit, from where different stakeholders from different parts of the world are coming, and we have huge meetings for that. We have also got grant of the Center of Excellence in Unani Medicine at one of our regional research institutions of Unani Medicine
That is RRIUM in Srinagar. This is a very state-of-the-art developed research facility in Srinagar. It has a DST grant. It has Government of India support. It is an NABH hospital institution. This is surfacing on various wonderful research papers in national and international reputed journals are there. And recently, Government of India, with all thanks to Ministry of Ayush, that it has been granted a Center of Excellence also. Center of Excellence in digital therapy as we have there. Now we have two centers in Unani System of Medicine, Center of Excellence. We together can work, we can learn from each other. We can go to those centers where this kind of international centers are working so that we can develop these centers as a state-of-the-art facilities. We have more than 365 crores rupees Government of India has given. We have made one wonderful facility, as he said, the Taj Mahal of Unani Medicine in Ghaziabad, a wonderful location. And just in remarkable time, I think 3 years is hardly has happened, and we are there. It's already ready to launch. We are starting it. We are starting the appointments kind of situation. We are in that. We also have recently we went to Kashmir with Honorable Minister Sahib, and Minister Sahib inaugurated one government college in Kashmir, in Ganderbal, with the cost of almost 30-40 crores rupees. Where CCREM also gave around 15-20 crores rupees in that. And that college is already running, almost 60 students capacity is there. Recently, one more important thing has happened just 2 days before. Secretary Sahib was in Geneva with the WHO chief, DG. And they exchanged that Global Traditional Center of Indian Medicine, Traditional Medicine in India. He's also coming to us on 31st September, DG. We released, the WHO DG and the Secretary in Geneva have released the benchmarks in Unani medicine. And benchmarks of practice in Unani medicine, benchmarks of practice in Ayurvedic medicine, that was released by WHO DG just 2 days before. That has already been documented and released. This is a very big achievement for the Unani system of medicine. Now, all the world, whoever wants to do Unani medicine across the globe, who are the WHO member countries, they know what to do, how to, what kind of practice is required, what kind of requirements are there to start the practice. We have training benchmarks for that. So huge exercise has been done for last 3, 4, 5 years, and finally now it has been released. The document has been released. We also are working on the WHO document of the standard Unani terminology. Very soon that will also be mature. So my point is that we have hundreds of activities are happening in Unani system of medicine. I am getting one Silchar, building is just ready, and I'm traveling almost another 2-3 days. I'm going to Assam for that. Looking to this, hopefully within this month, we are going to get a regional research institute in Unani medicine. It was a small center, now is a huge building of 4-story, and I'm taking almost 50 crore rupees we invested in that. Hopefully coming month we are inaugurating that. We also got one new building in Navi Mumbai. We shifted in that building. We were earlier in JJ Hospital in Mumbai. We are having a co-location center there now, and we have shifted a new building in Mumbai. We have upgraded our National Institution of Skin Disorders. Now it's the National Institution, it was a central institution. Now it has been upgraded as a National Institution. Honorable Vice Chancellor Sahib was kind enough to grace the occasion in Hyderabad. It was a wonderful visit we had there. So many other hospitals, that's the NABH hospital. I'm also getting my hospitals, NABH, all the council hospitals, which are clinical centers. And I had requested Honorable Vice Chancellor Sahib also, and I request the Dean Sahib also, to please get into this, that we shall have NABH hospital. Our hospital should be NABH. And for that, you can contact the NABH wing in Quality Council of India. So people, if you want any assistance, you can provide, if you run any kind of a training for your faculty members. So we can ask our people online, offline, the people who have got the things done, they can guide and they can handhold and they can do that. So I think this is a positive way. We shall immediately start working on that because it requires some time. So I think better we start as early as possible. So these are the things which I wanted to share, that we have ample opportunities. We have wonderful opportunities to grow within the country under the leadership of the Ministry of Ayush, CCREM. We have a long history of association with Jamia Hamdard as a CCREM. We have collaborations, we have MOUs, we have many research projects going on, and I'm thankful to the leadership and the scientists here who have been working very hard in making some standards of the Unani system of medicine. Many pharmacopoeia standards have been developed here alongside what we are doing in our laboratories. Many collaborative research projects are already going on in Jamia Hamdard. Many are still in pipeline. Some people have applied there. So we would love to have more collaborations, fruitful collaborations with the CCREM and the Ministry and the Jamia Hamdard. So I will not take much time.
I wanted to speak about educational system and all that. I wanted to speak about the this traditional medicine role and Unani medicine role in non-communicable diseases and lifestyle disorders. But I think that there are wonderful speakers, which I can see, international speakers I know from speakers from Sri Lanka and Geneva and Presidents and others. They are very good scholars. I know them. I hope they will be having huge deliberations and wonderful deliberations on that. So I did not touch that part, and because we know that Unani medicine, as Ram Shah Sahib was speaking, that Unani medicine has a huge contribution also, and a lot of opportunities are also there in Unani system of medicine, particularly with the lifestyle disorders. Because lifestyle disorders are one line I will tell that it is going to take a huge space in the disease burden of the world, and people do not have the answer to that. Lifestyle disorders, much systems do not have an answer, and this is going to have a huge share in the disease burden of the world, unfortunately. And Unani system of medicine being a lifestyle kind of a system, it can play a wonderful role in managing this and bringing this load of diseases down. So I think this is a good opportunity. I hope that the deliberations which will happen in this conference, they are bringing great understanding to our young scholars, our students, and our scientists, not only from this Unani fraternity, but other sciences also, because they are working in a very close coordination with each other. I was telling our Honorable Vice Chancellor in the lounge sitting there that I think this is the only facility probably across the country, which I can say at the moment, where such a close-knit interaction is happening of Unani scientists with other sciences. This close interaction is not possible. Other places to meet, to go, probably you have to do MOUs, you have to make some conferences, you can invite one person to speak. Here, everybody is available or sitting in the same platform. And such a wonderful interactions. I think this is a win-win opportunity for the Unani people also, and win-win opportunity for other sciences also. So with this understanding, I pray and I wish that inshallah we will grow and we will achieve and we will bring laurels to this university and for our nation. Not taking much time, once again, thanking you very much for inviting me and providing me this opportunity to have interaction with the young students and our members. Thank you very much, Honorable Vice Chancellor. Thank you so much. Thank you very much, Asim Sahib, for a wonderful speech. In the last, the president of this inaugural session, our Honorable Vice Chancellor, Professor M. Afshar Alam Sahib, for his presidential remarks. The chief guest of today's function, Professor Asim Ali Khan, Director General, CCRUM, guest of honor, Dr. Mukhtar Kasmi, Advisor, Unani, Ministry of Ayush, Government of India, Dean of Humor, Professor Arif Zaidi, Professor Ram Krishna Shah, President, Global Unani Medicine Research Foundation, Chicago, USA, Professor Javed Ahmed, President, NISA, Professor M.A. Jafri Sahab, Professor Dr. Mohsin Delhi of UDMA, Professor Suhail Parvez, Professor Fatima, Professor Muhammad Akram, Dean of Schools of different schools, teachers, students, and all participants. A very warm good morning to you all. Now, good afternoon is here. All present during this international conference on the role of Unani herbal drugs in present-day scenario and a lifestyle disorder, jointly organized by the Department of Tafsir wa Samaji Tib, School of Unani Medical Education Research, Jamia Hamdard, and National Environmental Science Academy, New Delhi. Everyone must know that knowing the contribution made by our founder of Jamia Hamdard, late Janab Hakim Abdul Hamid Sahib, towards the Unani medicine in the 20th century. The role played by Hamdard Dawakhana is very noteworthy, and the Hamdard has propagated its product very well, and thus Unani drugs and Unani product are today very well known to all. As far as the Unani medicine is concerned, it is the medicine for health and science. The system of medicine aims to help the people of healthy and stress-free lives. The ancient Unani medical system also has a potential to reverse a person's declining health. Unani medicine is very safe, known for its efficacy, easy availability, and very cost-effective.
I would like to reiterate that it's extremely cruel at this juncture to identify the significance of Unani medicine and thus propagate the benefit of its use to people across the world so that they can get the true benefit of leading a healthy life. In today's scenario, the Unani system of medicine is being used as an immunity booster to prevent the COVID pandemic and other viruses. I am in a strong opinion that we need to practice Unani medicine in our daily life to take best possible advantage, such as stress relief, fitness, enhanced immunity. Several steps have been taken in India to promote such medicine and integrate them into a clinical practice, which Dr. Asif has already mentioned. And my friend advisor Ayush also mentioned there what are the activities. The government is very serious. The government is supporting, and this government recognized Ayush as a separate ministry. That is a great advantage. Now, is the evidence-based incorporation of in traditional medicine, a clinical practice will help to provide a quality healthcare to all. With a great pride, I take this opportunity to thank both the chief guest and guest of honor that Ayush Ministry, Government of India has conferred the status of Center for Excellence under Unani Medicine. We are very grateful to the Ministry of Ayush for reposing faith in Jamia Hamdard. I do hope that the researcher of Unani Medicine attending the conference will discuss the issue of threadbare and they will come out with some concrete solution for uses of Unani herbal drugs in the present scenario and lifestyle disorders. I wish this international conference all success, and very soon we will develop a telemedicine center in our School of Unani Medicine so that you can provide your skill to all over the world. So inshallah within 3 to 6 months we have very good telemedicine center. It's all depend on D whether he want in a school or in a Majidia hospital. So in these words, I thank the organizers who arranged in a very short time, and also I recognize and thanks to the Department of Science and Technology for the support of grant of this international conference. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Vice Chancellor Sahab. As a tradition of every conference, we publish a abstract book or souvenir. But keeping in view the COVID scenario and digital intervention of literature, we have received around 120 abstracts of papers which have been incorporated in an e-book because it was not possible to publish it physically because in 2 a.m. this morning we have received some abstract. So we have published it in a e-version. So I would request the guest to release the e-version of this souvenir and abstract book of the conference. Thank you very much, everyone. Now it is my pleasure to propose vote of thanks because it was not possible to have this international conference in a very short span of time. For that, I am thankful to Honorable Vice Chancellor for his support and also the Department of Science and Technology for providing us the financial support. I am thankful to press and media for coverage of this conference. And I'm also thankful all the authorities of Jamia Hamdard, including Registrar, Finance Officer, our Dean, for supporting this conference in a way that we could not
feel that this is a very short duration of time. Whenever we propose something, it was approved then and there. So I am thankful to everyone, Vinod Saab and Professor Suhail Parvez Saab, for performing all the tasks, being in a very silent supporter of this conference. Thank you very much, sir. I'm also thankful to all the teachers of my faculty for supporting in a way that for mobilizing students, for participating MD scholars. And in my colleagues, I would like to name Dr. Shifa Zaidi, who worked day and night for the successful of compilation of this souvenir and ebook. I'm thankful to the staff of Convention Center and also the staff of Computer Center, though they are not present here, but they are supporting us electronically, managing, especially I would name Rahil Beg Saab and Rajesh Pandey, who is managing all the event of this conference. Thank you very much, everyone, for coming to Jamia Hamdard after a gap of 2 years of COVID-19. We are first time gathering here in a physical mode. So thank you very much. And before end, I would request all of you to rise in your seats for national anthem. Thank you very much. All the guests are invited for a high tea outside the. And I will request all the committee members to come over there as well as for a group photograph.
क्या हाल है? ठीक है बैठो। क्या बात और कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। हाँ यहाँ क्यों छोड़ दिया? अच्छा 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 अभी वही है क्या नाम है कन्वर्ट वही है और क्योंकि वो उसका ट्रांसफर हो गया आप लोगों ने म्यूचुअल करवाया अपना तो वहाँ से आपका कितना दूर है वैसे यहाँ तो कर दिया 5 साल के बाद एक्चुअली आपका तो यहाँ केवीके का वो है ना कि वहाँ से आता है ना ICUM और कुछ कंट्रीब्यूशन पूरा फुल शेयर है क्या ये शुद्ध है कि केवीके का कोई बंदा आया है कि बीच में जो उनकी जो है वो जो वो है वो कम कर दी है क्या पहले मैंने ये सुना था कि इसके बारे में बोल रहा था कि वालों को कम करना ये यूज बात करें हाँ तो कम करिए हाँ इसको करके कम वहाँ सेवन से नहीं सर एसएमएस वालों को जैसे हमारे यहाँ पे भी एसएमएस आया उनको भी नया मिल गया तो जैसे 6,000 वाले हैं उनको नहीं मिला ना किसी तरह का नहीं है 2 साल हो गया 4 साल हो गए तो फुल सैलरी मिल जाएगी वो तो अभी तो यहाँ 50 चल रहा है 50 हाँ उन लोगों का हो गया इसको भी देगा साफ पार्टी आई है तो ये मुझे लगता है कि अपना मैन्युफैक्चर जो बनाया था ना उसमें लिखा था कि कमीशन भी देंगे और वो पेंशन भी देंगे हाँ तो इन्होंने कहा था कि पेंशन भी देंगे आपको पता नहीं पेंशन देते हैं क्योंकि 2-3 स्टेट में शायद लागू कर दिया ओल्ड पेंशन ही तो सहारा था जैसे हम लोग मान ले रिटायर कर गए 10 साल के बाद तो हम लोग क्या करेंगे रिटायरमेंट आते हुए कोई पूछता नहीं हमने खपा देंगे तो उसके बाद जब टाइम आएगा तो क्या मिला एक लॉलीपॉप मिला उसके बाद लॉलीपॉप लेकर के घूमते रहते और पेंशन जो रहता है आज तक मैं देखा हूँ जितने सीनियर लोग हैं पेंशन से भी अपने घर को बड़े अच्छे से चला लिया बच्चों को पढ़ा दिया बहुत सारे ऐसे लोग थे उनको मैंने सबको देखा तो ये तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया आप उसकी पूरी एनर्जी आप उसकी पूरी एनर्जी खींचिए अच्छा आप जैसे आर्मी वालों की एयरफोर्स वालों की एनर्जी खींचते हो तो उनको पेंशन तो देते हो पहले तो देते थे आप हाँ तो ये तो मेरे ख्याल से गलत आप फॉरेन कंट्रीज जो है वो अभी तक जो है फॉरेन कंट्रीज में अभी तो पेंशन पे
काम नहीं भी कर रहा उसको भी लॉन्च देते हैं, या तो पेंशन वो है जो उसने काम किया उसके पैसे का सकता है। दिसंबर में तो उसको कोविड हो गया, तो जैसे 2 weeks तो उसने अप्लाई किया था, तो उसको जितना गवर्नमेंट का सैलरी था उसका हाफ सैलरी उसका 50 डेज का उसको पे किया, सो दैट आपका जो खर्चा है वो आपका मैनेज होता रहेगा। अगर आपको किसी टाइम उसके लिए फॉरन में देखना चाहिए, कैसे गलती तो हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि लोग ऐसा नहीं हुआ कि लोग भूख के मारे मर गए। इंडिया में क्या है कि भूख से लोग मर गए, यहाँ भूख से लोग मर गए, ऐसा नहीं। लोग वो तो बड़ा माना हिंदुस्तान है, लोगों को खाना खिलाया, लोगों को प्लेन दिया। तो वहाँ ये सब शुरू हो रहा है आपका क्या? कितना आपको दिया है कि मतलब महीने में कितनी छुट्टी करानी? महीने में तो अभी मैंने लास्ट ईयर में समथिंग कराई, इस ईयर में जैसे काम करते हैं साल की नीड को है साल नहीं 1 वीक वाली नहीं 1 डेज तो ज़्यादा है, 5 डेज ये भी काम कम करता है ना। नहीं ठीक है, लेकिन वहाँ पे 3 विजिट्स होती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा है, फील्ड विजिट होती है। और मेनली है कि आपका कंसर्न है वो फार्मर से, हम तो रह चुके हैं ना, इन्होंने महान लोगों से महान लोगों ने ट्रांसफर करवाया, देखा तो है, लेकिन ऊपर वाला देख करके भी तो वही मैं बता रहा था कि मतलब हमें तो अच्छा लगा काम करके वहाँ पर, और बच्चे बहुत ही काम करने में मज़ा भी आता है, और टेंशन कम रहता है। यहाँ पर जैसे आपके पास टेंशन बहुत, टेंशन किस चीज़ का, सपोज अगर आपके पास कोर्स जाना है, क्लास में पहले पढ़ना फिर पढ़ाना, सारा दिन दूसरी दिन जाता है, एक हो गया। दूसरी बात क्या होती है, कॉपी जाना, और मुझे तो एलर्जी होता है कॉपी पर। हाँ, तो बिना उसके पर फिर उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा ना, उसके साथ इंसाफ में किसी कॉपी अच्छी है क्या आ रहा है नहीं है, किसी को कम हो गया किसी को ज़्यादा हो गया। तो अब इस चक्कर में जो है ना मैंने काफ़ी मतलब मोनोटोनस वर्क हो जाता है। जैसे बैंक वाले लोगों का काम नहीं होता, चेक बनाना, चेक ये करना, बैंक वाले बोलते हैं बहुत, तो चेंजेस एक तरह से आने चाहिए कि जैसे आदमी हमेशा टीचिंग करता तो फिर शिफ्ट होता है। जैसे फार्मर्स को कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ है, अगर हमारे टेक्निकल नॉलेज है सीखने को आपको मिलती है, आप उनको बता सकते हैं क्या पैसा करो आपका क्या प्रॉफिट होगा, इवन वो आपको ज़्यादा सही सिखा देते हैं पुराने काम में। हाँ, अरे उन लोगों के पास पूरा एक्सपीरियंस रहता है, हम लोग तो स्टूडेंट टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मैंने इतना काम देख लिया है, लेकिन वहाँ पे अगर आप फार्मर्स की छोटी सी भी हेल्प कर दो, उनको गाइड कर दो, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। फार्मर का एक्सपीरियंस ये कि मैं वहाँ पर 2.25 साल रहा, ऑलमोस्ट 2 साल में 2 महीने कम, तो मेरे जितने फार्मर्स के कॉन्टैक्ट हुए मैंने, वो ऐसा था कि खाली हमने उनका फोन बार बार आता था कि आप कब आ रहे हैं, और जिस दिन कह दिया कि हम आ रहे हैं पानी डाला करके नहीं हुआ। अगर कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम बच के भी गए तो बॉर्डर पे, तो वो अपने कुछ कम मिलता है,
साल है, लेकिन जब जब मैं गया ना तब तब मुझे हम लोगों को अंजना आइडिया में निकाल के गोली आती है पता है वो पकड़ के बोलते जाओ लेकर जाओ वो ऐसा इन्फ्लुएंशियल आदमी था कि वो पार्टनर को एक बार में और बार में करते जाना तो एक लोगों का पूरा सब वहाँ पर सक्सेसफुल था हमारा और देखो मैंने 1.5-2 साल बस था कि मतलब हमें ज़्यादा दिन तो रहना नहीं है ज़्यादा ज़्यादा तो बड़ा अच्छा लगा इसका कैसा था गूगल का मुझे अब तक में सबसे अच्छा स्टूडेंट जो लगा हमें तो मैं मना कर दिया वो शुरू का एक लड़का था हाँ 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 बहुत बहुत कुछ होगा बहुत और हमेशा मैंने देखा जो देते थे और हमेशा जो है वो हमेशा वो स्माइलिंग फेस में रहता था वो नहीं कि मतलब देखता ही समझा देखना चाहिए टॉपर था ना टॉपर देखो अच्छी जगह चला लेकिन पिछली फील्ड में शायद नहीं है और फिर मैंने MBA वगैरह किया करके वो जो है चला गया किया चलिए अपना डायरेक्शन गवर्नमेंट जॉब उसका डबल ट्रिपल पैटर्न और वहाँ पर पढ़ लगा था एमएससी एग्रीकल्चर किया था उसने उसके बाद वो PhD एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ चला गया मंडी तो वो चला गया था हिमाचल प्रदेश तो वो मेरे पास आ रहा था जब मैं हॉस्टल में था यहाँ पर शुरू के बाद मैं आ रहा था तो मेरे पास आ रहा था इंग्लिश पढ़ने के लिए तो वो था एक लड़का और था 2-3 लड़के वहाँ तक तो हर एप्लीकेशन वो लिखवाता था तो जब वो लिखना से चला गया उसके बाद मुझे पता नहीं क्या एक बार वो उसका लीडर को फोन आ रहा पहचाना सर मतलब मैं मनदीप करते करते आया आज की डेट में देखो वो बता रहा एक बार यहाँ आया अमृतसर अभी पिछले 2-3 साल पहले की बात है वो स्पेशली अमृतसर आया और अमृतसर से खास के वो स्पेशली अपने समीजा को लेकर के यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही थी मैं इसमें कर रही थी कोरोना से पहले तो बता रहा था कि मैं वहाँ से छोड़ने वाला था मेरा टाइम खत्म हो गया था मुझे भागना है मुझे संपन्न हो गई किसी भी कंप्लीट नहीं हुई बड़ा गवर्नमेंट में PhD कर रहा था वहाँ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वहाँ उसका फादर का वगैरह था इसमें किसी तरह 16 लाख या 28 लाख इस तरह से करके देखा करके वो चला गया लेकिन हाँ हेलो
रख लो। और 7 को कितने बजे है? डेली कॉलेज से बोल रहे हैं ना? ठीक है, ओके। 7 अप्रैल। तो वो फिर आया, उसमें फिर बताया, वो बोले कि हम वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब जरूर, तो मतलब के पास बड़ा भी मेरा 10 दिन था। बोला कि 10 दिन में मैंने मेरे से किसी से जान पहचान थी, उसको इसको प्रपोज किया, उसमें इसका मैंने पूरी तरह साथ दिया, फिर उससे मैरिज कराई, फिर वो सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट हुआ, उसको फाइनेंशियली पूरा हेल्प किया। उसके बाद ये जो है ये डिपार्टमेंट कंप्लीट किया, बोला कि मेरा ऐसा था कि मतलब मैं क्या करूँ। तो अल्टीमेटली जो है मैं सर्वाइव कर गया और रहा। उसके बाद आज के दिन में वरना हॉस्पिटल जॉब करना, और बोला कि किसी को इतना जंप नहीं मिला रहा। बोला कि मुझे एक जॉब मैंने ज्वाइन किया, गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद डायरेक्ट फोर्थ जंप मिला। मैंने सेकंड थर्ड को नाम करेंगे, फोर्थ जंप किया। तो बताता हूँ गवर्नर ने किसी ऑफिस में जो है ना व्यक्ति था, बार बार बोल देता कोई काम नहीं, पर हम गेम भी दिया रहते हैं, तो फायदा भी होता है। बहुत सर, बहुत और ठीक करना। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
डॉक्टर कृष्णा, हाँ वो लेक्चर है टोटल तो आप लिखे थे कि अप्रूव हो गया तो अभी बताया नहीं दो मैंने उनसे पूछा कि दो तो है कि नहीं मुझे नहीं अच्छा मैं कहीं हाँ
बोतल क्यों? क्या है? हमने दिया है। नहीं आपका नहीं है, वो लेके तो कहाँ है? मैं पहले क्या बोले? चलिए अच्छा बोले आइए सर। सर मैं इनको बुलाता हूँ। आ जाइए सर ऊपर।
आयरन की दवाई है ना, आयरन की दवाई है। हाँ आयरन की।
टीम सर आपकी। ठीक ठीक है सर, ठीक। ये चाहिए आपको कि नहीं? क्या है पॉइंट दिखाने को नहीं, किसी से हो जाएगा ना वो बड़ा वाला नहीं नहीं ऐसे देखिए सर, इसमें फुल व्यू नहीं। फुल है, अच्छा अच्छा वर्जन चाहिए आपको? Good afternoon, all of you. Myself, Dr. Muhammad Abu Bakr Qadri, lecturer in the Department of Tashrihul Badan Anatomy in the State Takmiluddin College and Hospital, Lucknow, UP. Today, my topic of presentation is environmental health and Unani system of medicine. In word environment, that derives from the French word environ, that is the meaning of surrounding or encircling. Whatever that is found around the human being, that is called the environment. It means all the living beings and non-living beings, material and non-material, that is present surrounding the human, that constitutes the environment. Environmental health, the aspect of the human health and the diseases that are determined by the factor in the environment. For the descriptive purpose, we can divide the environment into three main components: physical environment, biological environment, and psychological and economic environment. Physical environment includes air, soil, water, foods, beverages, sounds, radiation, housing, that constitute whatever physical thing that is present, it constitutes the physical environment. Another component of the environment, that is the biological environment, that includes plants, animals, microscopic organisms, including bacteria, viruses, fungi, protozoa, whatever that are microscopic organism that is present in the environment, that constitutes the biological environment. And psychological and economic environment, that includes habits, customs, culture, religion, and income, occupation, that includes the psychological and economic environment of human beings. We know the diseases have multifactorial causes. One of the main cause that causes the disease, that is the factors in the environment. So we will discuss here what are the factors that can influence our health and diseases. Unani system of medicine talks about the environmental factors that determines the health. One of the proponent of the environmental health, that is the Bukrat Hippocrates. He is a Unani physician that talks about the environmental health. And he was the first one who described the relationship between the diseases of the humans and their environment. And in another Unani physician, the Galen also observed the diseases are caused by some factors such as predisposing factors, exciting factors, and the environment. He also discussed about the factors that are found in the environment that can influence our health and can cause diseases. And apart from it, Zakaria Razi, another leading Unani physician, and he is also known as the Rhesus in the Western world, the Latin, and he was the court physician in the Abbasid Empire and was the director of the big hospital in the Baghdad. He had the concept of the environmental factors and their relationship to the diseases. He had the famous experiment regarding the picking up the site for the establishment of the public hospital. He was assigned to select the site of the establishing
the public hospital in the Baghdad. What he did, he actually he had just put some pieces of the fleshes to the different parts of the city, and over the time he observed some pieces of flesh, they have developed the increased rate of putrefaction, and some pieces of the flesh had very negligible and very lessened rate of putrefaction. What he observed and what he just observed that something in the air was present that must have caused the putrefaction, the more in a very speedy way. So he had the concept of the environmental factors. So he picked up the site where the flesh of the flesh was less putrefied, less putrefaction. So he had the concept of the environmental factors. There must be something in the air that would have caused the infections or some putrefaction of the flesh. This is the slide that shows the environment, and this one picture that shows a lot of smoke that is blowing out from the chimney, that shows the polluted environment. Polluted environment is one of the factor that actually affect our disease, that can cause a lot of diseases among the humans. So we should have healthy air, clean air, so we can remain healthy and disease free. And another slide that shows the clean environment, healthy environment, in which the water, soil, and whatever thing that is found in the environment that appears to be clean and healthy, that is the perfect and the desiring aspects that can actually influence our health, that can make us healthy and can keep us away from the diseases. This slide shows different aspects, different factors of the environment that can influence our human body, that can have effect on the human body, such as radiation can also have effect on our human body and can affect our health, and air, water pollution, diet, drugs, stresses, infections, and behaviors, and all our surroundings, our social atmosphere, whatever that is found in the environment that can affect in a positive or negative way on our human body. The Unani system of medicine lays stress on the environmental factors such as air, water, food, beverages that can influence health adversely. And if we modulate them, and if we actually use them in a good way, so we can actually preserve the health also. We can prevent the diseases, we can remain healthy if we can modulate the factors that are found in the environment. And one of the factor of the environment, that is the physical component of the environment, that is the air. Air supports all forms of the life on this planet Earth. And air also provides oxygen to the living beings on this planet. And apart from giving the oxygen, it actually it allows for the humans or other living beings to have the sense of smell and the hearing possible. Air is also the part of the Ruh, and the vital force, that is the concept in the Unani system of medicine. Without the presence of the Ruh, the human body and its different structures cannot function and cease to exist. So air is also the part of the Ruh, and that actually, according to Unani system of medicine, and that constitutes the very important force that actually controls our different structures or organs, and our life actually depends upon it. And apart from it, there is a atmosphere. So the environment that is made by the different layers of the airs, that we call it as the atmosphere. So there are different layers that actually encircles around this planet Earth, and that constitutes the atmosphere. Composition of the air.
As we know, the normal composition of the external air is as follows. The nitrogen constitutes 98.1%, oxygen constitutes 20.93%, and carbon dioxide constitutes 0.03%, and the other gases that are found in the traces, such as argon, helium, krypton, neon, and uh, krypton. Air is also acts as a vehicle for transmitting the disease. As a disease agent, it can be polluted by the combustion of the coal, gases, and the oil, decomposition of the organic matter, trade and traffic, and all these processes add dust and fumes to our environment, and that makes our environment dirty, polluted, contaminated. That affects our health and causing the diseases. Unani system of medicine describes the various types of the airs and their effect on the human body's morphology, on its anatomical characteristics, on its biophysiological activities. All these are actually carried on with the help of the air. So Unani system of medicine talks too much about the air because of its importance for just carrying on the different various biological activities inside the human body. Air that has changed composition neither keep health nor prevent diseases. This is the phrase in the Unani system of medicine. हवाएं मुतगय्यर न ये सेहत को कायम रख सकती है और ये बीमारी फैलाती है. Various types of the air according to the Unani system of medicine, and that is as follows. हवाएं मुहित, that is the surrounding air. हवाएं आलिया या जबलिया, mountainous air. And हवाएं मशरक़ी, oriental air. हवाएं मग़रिबी, occidental air, the western flowing air, west flowing air. हवाएं शुमाली, northern air. हवाएं जुनूबी, southern air. हवाएं बहरी, coastal air. हवाएं गर्क़ी, low lying regions air. So these different type of the airs that are described in the Unani system of medicine that have role on our human body, they actually all these affect somehow human body, and they can affect and lot of things they can actually happen to the human body. These different types of air or winds have effects on the human bodies. All these air or winds have varying amount of moisture, suspended particles, amount of the sunlight and other different gases, and their varying amount of velocities. All these have effect on the morphology of human body and the homeostasis of the human body and various biochemical activities that is carried on inside the body. According to the Unani system of medicine, and if we talk about the etiology of the diseases and the health, in the Unani system of medicine, there is a concept of asbab sitta zaruriya, 6 essential things that is very important for just maintaining health and preventing the diseases. And one of them, the essential thing, that is the air. We are talking about it here. Air is the essential for living beings due to increased and reckless human activities such as rapid industrialization and urbanization and automobile exhaust. Air has become polluted, contaminated, and becomes a source of various types of diseases among human beings, such as respiratory allergies, some other respiratory diseases, and lung cancers can be attributed to the polluted or contaminated air. Air pollution, when the air becomes polluted, it is no longer can have effect to maintain our health. We call it is a air pollution. It signifies the presence of the substances that should not be there in the air. Such substances such as gases, particulate matters that are generated by the human activities in the concentration that interferes with the human health, safety, comfort, and injurious to the vegetation and animals on this planet Earth. It is air pollution. Sources of the air pollution, around 100
components and substances that have been found to be air pollutant that can make air pollution, such as carbon monoxide and sulfur dioxide, carbon lead, carbon dioxide, ozone, and particulates matter. So these are the one of the major type of the air pollutants, and that can cause air polluted. We would not go very deep into these different type of air pollutant, but we should know these are some major common type of the air pollutant that cause air polluted. Water, another the component of the environment, that is the water. Because it is not only vital environmental factor to all forms of life, but it has a great role to play in the social economic development of the human population. So we know the various civilization that happened and progressed around the banks of the different water bodies and the rivers. The water has a great role to play for the development of the human civilization. Without the clean water and the safe water, the positive health and the well-being cannot be thought of. Water should be odorless, it should be pathogen free. So this constitutes the clean and the healthy water, and it should be odorless. It should be having the pleasant taste, and it should not have the offensive smell. Or it should not have various type of the chemicals that are dissolved that is not required, and all it should be clean. Unani system of medicine talks about the different types of the waters and their effects on the human body. As far as the morphology is concerned, it can influence the anatomical characteristics also, and it can affect its various biophysiological activities. In the Unani system of medicine, the different types of waters that contains a varying amount of substances such as metallic minerals, non-metallic minerals, and other elements and other suspended particles that are found inside the water. The Unani system of medicine discusses different type of the water that have all these such type of physical components. And the varying physical characteristics such as different colors, compositions, physical effects, they actually impart to the state of the health and the diseases. The water requirement for the human being, for the our just carrying on all the metabolic activities inside the body. So our human body requires 2.5 liter of water per day. But this requirement of the water, that is not adequate. It is for just our survival only, for the health, for the public health point of view. So we need more water because we need to bathe ourselves, we need to wash ourselves, we need to clean our surroundings. So we need more water as per WHO requirement for a daily supply of 150 to 200 liters per capita is considered an adequate supply to meet out the needs for the human beings to remain healthy and to just preventing the diseases. So we would talk about the different sources of the water. And rain is the very prime source of the water. All the water that you see, that actually the main source of the water, that is the raining. And the rain and the water of the rain that appears to be clean and the pure, but when it actually passes through the different layers of the atmosphere, it actually picks up different impurities that is suspended in the air, and it becomes impure. But these impurities actually, they are not hazardous, but sometimes due to the air pollution, so these impurities can actually make a lot of different
substances such as hydrochloric acid and some nitric acid, they can actually bring down the acidic rain. So they can actually impact the living beings, the animal life, the plant lives. So it becomes a dangerous and it actually constitutes a health hazard. And another type of the form of the water that you see, that is the surface water. It is the main source of the water supply in many areas. Examples of the surface water includes the river, tanks, lakes, wadis, and man-made reservoirs and the seawater. Whatever water you see on the surface of this planet Earth, it constitutes the surface water. There are different examples and the forms of surface water, and one of them, that is the impounding reservoir. This is a form of the surface water, and these are the artificial lakes that are dug out, and they are just constructed by the earthen and masonry works. So we, with the help of such a reservoir, we can actually store too much amount of the water, and this water can be used for the supplying the humans' needs. Another form of the surface water, that is the spring, chashma. When the groundwater comes to the surface freely without applying any pumping mechanism, so it actually just come to the surface through the natural pressure, it is called as the spring. The spring may be of different types, but we would not go very deep into the springs, but springs may be two types, the shallow spring and the deep spring. The shallow spring, it may dry out in the summer season, but the deep spring that may continue even in the dry season also. So its water does not dry up; it remains in flow even in the dry season. And another form of the surface water that you see, the water in the sea. The sea. The seawater is plentiful, but it is not potable. It is not usable because it contains so much minerals, so much salts inside it. It is having 3.5% of salts in the solution. It is not fit or potable for, so you cannot actually drink it. It is so abundant, so plentiful, but you cannot drink it. But you can actually demineralize it, desalination you can do, and you can use this water usable. But it actually requires a lot of expenditure for just setting up all the plants for just desalinating it, demineralizing it. We have also talked about the water becomes impure when it actually just passes through the different layers of the atmosphere. The water becomes impure through the natural and man-made activities. And the natural impurities are not essentially dangerous, but the man-made activities that can actually make the water, the reservoir of the water, dangerous and polluted. The more serious aspect of the water pollution that is caused by the human activities in the form of urbanization and the industrialization that has polluted all the water bodies. And because of the industrialization, a lot of effluent from the factories, the industries, they are flown towards the water bodies, rivers, and all such thing that makes the water polluted of such water bodies, and that actually threatens the living beings that rely on such water bodies. And this also makes the water not fit for the human consumptions. Human health may be affected by the ingestion of the contaminated, polluted water, either directly or through the foods, or by the use of water for the purpose of the personal hygiene or recreation. If the water is polluted if for the recreational use, suppose the water that is polluted or infected in the swimming pool, it can also affect our life. It can also cause a lot of diseases. It can cause conjunctivitis. It can cause a lot of allergic skin conditions.
water-related diseases. The water actually, when it gets polluted, it can cause a lot of problem to the humans. It can cause diseases. The water-related diseases, water-borne infective diseases. If the water is carrying the infective agents, so it can cause infective diseases among the human population. And the viral diseases it can cause when it contains the disease causing viruses in the form of polio, myelitis, and hepatitis A, hepatitis E, and some rotavirus diarrhea, and some other affections are there that is due to the water that is contaminated or infected with pathogenic pathogens such as virus. Bacterial diseases, and if the water is having bacteria, it can cause um, the bacterial diseases, and dysentery and all other um, E. coli, diarrhea, and all other things that can be caused by the water. And protozoal diseases, amoebiasis, giardiasis, if the water is infected or contaminated with protozoa. And helminthic diseases, a lot of diseases that can be carried out, that can be carried on if the water is infected or infested uh, with helminths, Escherichiasis, and lot of other type of helminths can be caused by the water that is infected. And another type of the disease that is just born by the water, that is the chemical waterborne disease. If the water is having the chemicals that should not be there in such a quantity, that actually causes diseases. Dental diseases, if the water is containing a lot of suppose it contains a lot of excess content of the fluoride, so it can cause dental fluorosis, and it can actually it can cause the mottling of the enamel, like the yellowish discoloration of our teeth. That is due to the excess amount of the fluoride that is found inside the water. If the water is just having excess amount of the fluoride, it is a chemical. And even in the severe form, it can cause the skeletal fluorosis, where our bones can be fractured. It can be so brittle. So this is due to the water pollution that is caused by the excessive deposition of fluoride content. Methemoglobinemia, when the excess lot of nitrates are there in the water, it can cause methemoglobinemia, and this can cause cyanosis, especially in the children. And heavy metal toxicity, if the water is having the lot of heavy metals, it can cause toxicity, lead toxicity, and lot of other heavy metals that somehow are found inside the water. It may be due to the reckless human activities such as industrialization and urbanization. A lot of effluent that is flown out from the industry or factories, they actually go to the water bodies, and where they have excess amount of them. So it can cause cancer. The various type of the water described in the Unani system of medicine are listed as follows. The Unani system of medicine talks about the various type of the waters. Mai Matariya, rainwater, Mai Ain, spring water, Mai Jayyadul Jawhar, the healthy water, the water that contains the very balanced component, very normal component, the component that is required for the human body for their health and just to keeping away from the diseases. And Mai Rakida, the stagnant water, and Mai Madaniya, metallic mineral water, Mai Hadidiya, ferrous rich water, and my Nahasa, copper-rich water, my Naushadri, ammonium-rich water, my Mala, salt-rich water, my Shabia, alum-rich water, my Bayer wa Karis,
the water that is flown in the aqueduct and the well water. The Unani system of medicine talks about the various different categories of the water. They have effect on the health of our body, and they can actually cause the diseases also if we are not getting. The Unani system of medicine talks about different varieties of water, because the Unani system of medicine talks about the environmental factor that can influence the health. So we would not go very deep in the various type of the waters that can have different diseases. It can be good for our health and how. And when now we are talking about the polluted water, so we need to clean the water in order that is fit or portable for the human consumption. Purification water, we can actually clean the water that is available. So there is a method, we call it the purification of the water. For the purification of water can be done for the community basis and for the individual households. If we want to serve the clean water for the large communities, we need the different method for the purification, such a large water supply that you are intended to give. And the purification of water is to produce water that is safe and wholesome. There are various ways through which we can purify the water. There are the following measures for the purification of the water. Storage. One of the way to clean the water for the community supply, that is through the storage. So this is the method where we actually just store a lot of water, and with this process we can actually remove 80-90% of the impurities. Because of the gravity and all the impurities, they settle down over the period of time, and water becomes clear and clean. So this just using this process of just cleaning, that is the storage, we can remove the most of the impurities. And another step in the process of the purification of the water, that is the filtration. So with this method, it is just the next step for the just purification of the water. So we have filters. We have got two types of the filter. That is the slow sand filter, it is a biological filter, and another is the rapid sand filter, and it is a mechanical filter. So this is the filter, this is the device actually, this is the provision, and that allows the purification of water. We would not go very deep here, but this is the step through which you can purify the water. And another is the disinfection. Disinfection is whatever, it is the third step, and whatever water you have got, and it may have some bacteria and some pathogens. So the purification or disinfection means just the process through which you can destroy the pathogens that are available in the water. So this is the disinfection. There are different methods through which you can disinfect the water. And one of the way of disinfection of the water is the chlorine, putting the chlorine in the water. So you can actually kill a lot of germs, lot of pathogens you can kill, but it has its own limitations and its advantages. It does not affect the spores and others type of, and the viruses it cannot affect, but it can kill the viruses in higher doses. Ozonization, and this is the another way of just killing the germs inside the water. And we know the ozone is the very unstable gas, and it can oxidize the impurities, the living, the organic matter inside the water. It can kill the germs, so it has a germicidal effect on the water. So with the help of this process, you can clean the water. Ozone is a relatively unstable gas, and it is powerful oxidizing agent. It eliminates undesirable odor, taste, color, and removes all the chlorine that is found in the water. Because over the times, due to the research, we have found that the chlorine
complexes that we use for in the process of chlorination, it can make some such complexes that can cause cancer. So over the times we have got the different methods of just cleaning the process. So it may cause some cancer. That's why nowadays we actually move to the different aspect where we can clean the water without the use of the chlorine, because the chlorine has found to be uh, carcinogenic in some studies. Ultraviolet irradiation. This is the another way of just cleaning the water, and it has also germicidal effect, and you can kill the germs. It is also kill the germs, and purification of the water on the small scale. For the individual households, you can clean the water by just boiling and just bleaching, putting the bleaching powder, chlorine solution, iodine solution, and potassium permanganate. So these are the different type of the method. The boiling is very easy and very easy. You can actually uh, kill the germs with the help of such process. Just boiling the water for 10 to 20 minutes, it can kill a lot of germs. It can kill even the spores and some other ova and the cyst, and you can, and it can also just do you can also remove the hardness of the water with the help of this boiling. So it is a very cheap and very easy way of just cleaning the water. Food and beverages. Food should be fresh, and contaminated food is the source of the diseases. A Unani system of medicine talks about the various types of the foods, such as the Ghazai Latif Kasirul Taghziya, the fine textured food with high nutritive value. And this and Ghazai Latif Qalilul Taghziya, the fine textured food with low nutritive value. Ghazai Kasif Kasirul Taghziya, the coarse textured food with high nutritive value. In Ghazai Kasif Qalilul Taghziya, the coarse textured food with high nutritive value. Low nutritive value. So these different type of the foods that has been taught in the Unani system of medicine. Our Unani system of medicine talks about the variety of the foods that can actually influence our health, and that can keep us keep us away from diseases. Another environmental factor, that is the noise, and it is defined as the unwanted sound, the sound that is found in the wrong place and in the wrong time. The noise has become very important stress factor for the health of the human being, and too much high intensity sound for a prolonged period, it can cause a health hazard, because it has been found, and the lot of noise can actually impair our hearing also. It can actually impair, it can change our moods also. So it is one of the psychological stress factor. So noise should not be too much, and it should not be for a prolonged period. It have the very negative effect on our moods and our health. Sources of the noise pollution: the high decibel sounds and okay, okay, only just I need just 5 minutes. Okay, sir. Okay, sir. I'm just finishing it. Effects of the noise, with the too much noise can cause auditory effect, and it can produce the deafness also. The control of the noise pollution is very important, because it actually pollutes our environment and is not suitable, and it is injurious for our health. And light is very important factor. Light is important because we need light for the proper vision, but too much light can cause the light pollution. That is not good, and it can cause the ecological disturbances among the living beings and other
uh, the insects and animals. The light pollution should be controlled, and another type of the environmental factor, that is the radiation. And the radiation is a part of the environment, and too much in radiation in the environment, that is also bad for our health. It can cause ionizing radiation, it can cause cancers, and these are different type of, if radiation is there, and we have to just protect ourselves and the people who are involved in the radiation, they should be protected with the protective gears. And meteorological environment is there, at atmospheric pressure and the air temperature, humidity and rainfall, all these are account for meteorological environment. And another is the residential environment, the resident physical structure that is found surrounded by the human beings, that constitutes the residential environment. And we need our clean and healthy and spacious residential environment, because a lot of diseases have a relationship with the residents, because some diseases such as tuberculosis that have been found in the very congested and very small spaces. So our residential environment should be spacious enough. This is the bibliography and whatever references we have got from these things. Thank you, sir. Thank you for your patience listening. Thank you. Is there any question? Presentation is open for discussion. Anyone would like to ask anything? So thank you very much. You have presented. Thank you, sir. Your presentation in a very good manner, and you have covered almost all the aspects of Unani medicine, the background and history, covering all the things from the period of Fraud and Galen, Ghazni, and Somalia, the meaning of the art has been covered very well. Thank you very much. Thank you. Now, any comment from your side? Now, I would like to name the persons who have been given the list. I would like to call again Mr. Dr. Fahim Heather Wasti, if he is present in anyone. Dr. Muhammad Ali Alam, Atika Hussain, Dr. Anisha Shahid, Muhammad Saliullah, Mariam Jameel, please go. Pardon? बोल देना इशारा कर देना अफीफा काज़मी प्लीज कम यू आर वेलकम हियर you need presentation on research on Unani herbal drugs, current range and possibilities. Very huge and vast topic. Please go. ये तो इसमें नहीं लगेगा अच्छा नहीं चलेगा ये वाला टिल्ट Assalamu alaikum. Myself Afifa Kazmi, PG Scholar, Department of Molejat, Government Tibbi College and Hospital, Patna. Today I will be shedding light on one of the crucial aspects, that is how research should be done nowadays. After analyzing previous researches,
The title of my presentation is Research on Unani Herbal Drugs, Current Trends and Possibilities. Objective of my presentation is to investigate the current research trends on the Unani herbal drugs and its possibilities. We all know research in Unani system of medicine are being done since six decades almost in two bases. On the basis of dissertation and project based. Dissertation जो है वो हम institution level पे करते हैं, जैसे कि being a PG scholar हम जो कर रहे हैं, और बाकी जो project based होता है वो central research institutions या फिर regional research institutions पे हो रहा है. और जो हमारा 3 बेसिक ड्रग्स हैं, मादनी, हैवानी और नबाती, इन तीनों पे दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट पे काम हो रहा है. जो मेथडोलॉजी है मेरे प्रेजेंटेशन का वो ये है कि मैंने कलेक्ट किया है ऑनलाइन डेटा NIUM का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर, और अजमल खान तिब्बिया कॉलेज का, क्योंकि रिसर्च इनका जो लिस्ट था मुझे वही अवेलेबल हो पाया, बाकी और जगह का नहीं मिल पाया. अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं इस पे भी काम करूँगी. उसके हिसाब से जो मौलजात है, मौलजात डिपार्टमेंट में दोनों जगह पे काम हुआ है. अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में 98 स्टडीज़ हुए हैं. ये 2013 तक का है मेरे पास, और रिसेंट जो है वो नहीं है. 17 तक का NIUM का है. तो अजमल खान तिब्बिया कॉलेज पे जो है मोस्टली जो रिसर्चेज हुए हैं वो कंपाउंड ड्रग्स पे हुआ है. बाकी थेरेपीज पे भी हुआ है, लेकिन काफ़ी कम रिसर्चेज हैं. NIUM का अगर आप देखें तो अननोन यूनानी फॉर्मुलेशंस पे हुआ है. अननोन उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा फॉर्मुलेशन है या उन्होंने कहाँ से लिया है. ये टाइटल में काफ़ी दिक्कत आई मुझे कि मतलब किस तरह से कलेक्ट करना है, या मैं उसको कैसे रिसर्च पेपर से सर्च करके या कहाँ से लूँ. उसके अलावा ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं इस पे, दोनों में. इल्मुल अदविया में अगर आप देखें तो अननोन रिसर्च यूनानी फॉर्मुलेशन पे इसमें अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हुआ है. 149 स्टडीज़ हुए हैं, और NIUM में 71 स्टडीज़ हुए हैं टोटल. एनिमल बेस्ड NIUM में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जबकि अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में 15 हुए हैं, 10% ओनली. लेबोरेटरी बेस्ड 94 हुआ है, जो कि 63% है, और NIUM में 11 हुआ है, जो कि 15.49% है. लिटरेरी भी हुआ है इसमें, और ह्यूमन ट्रायल्स भी हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि ह्यूमन ट्रायल्स ज़्यादा बेटर है अदविया में, इसलिए क्योंकि बहुत सारे नुस्खे हैं जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अतिब्बा ने उसको इस्तेमाल किया है. तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसको फिर एनिमल ट्रायल करें या कुछ. अगर सम्मी अदविया है तो हमें चाहिए कि हम उस पर काम करें मॉलिकुलर लेवल पे. इल्मुल जराहत में भी ये चीज़ें हैं. कम स्टडीज़ हुई हैं, शायद ये लेट से आया है इसलिए. अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में 26 स्टडीज़ हैं, और NIUM में सिर्फ 4 स्टडीज़ हैं. सारे ह्यूमन ट्रायल्स हैं NIUM में. अमराज निस्वा में अगर देखें तो इसमें भी काफ़ी कम सीट्स है अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में, और 8 स्टडीज़ हुए हैं बिल्कुल. उसके अलावा NIUM जो है उसमें 50% स्टडीज़ हुए हैं, 50 स्टडीज़ टोटल, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो अननोन यूनानी फॉर्मुलेशन पे है. अननोन यूनानी फॉर्मुलेशन का ट्रेंड जो है NIUM में कुछ ज़्यादा ही है. उन्होंने रिवील नहीं किया नुस्खा को कि वहाँ कहाँ से लिया है और क्या चीज़ें ली है उन्होंने. ये मोस्टली 100% बल्कि NIUM में ह्यूमन ट्रायल है, और अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में भी. तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब जो है उसमें NIUM में ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं, बाकी इसमें अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में नहीं है, क्योंकि तब तक शायद सीट नहीं आई थी. और IBT का भी यही हाल है, इलाज व तदबीर का. NIUM में 54 स्टडीज़ हुई हैं, और इलाज व तदबीर में NIUM में 5 स्टडीज़ हुए हैं. 5 में से 3 जो है वो थेरेपी बेस्ड है, और थेरेपी बेस्ड में भी मोस्टली हिजामा बेस्ड है. तो ये है कि मतलब सिर्फ हमारे पास थेरेपी में सिर्फ हिजामा तो है नहीं, दलक है, और भी चीज़ें हैं, उस पर भी काम करना चाहिए. NIUM में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो एक ही है, मॉस्किटो लार्विसाइडल इफेक्ट ऑफ वाइज तुर्की या कुछ ऐसा था. उसके अलावा सिंगल ड्रग्स पे काम हुआ है, कंपाउंड ड्रग्स पे काम हुआ है, प्रीवेलेंस स्टडीज़ हुई हैं वहाँ पे.
जो ट्रेंड है अगर उसको समराइज करें तो मौलजात में 38.5% जो है कंपाउंड ड्रग्स पे हुआ है और 97.7% जो है ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं और मोस्टली जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो है उस पर हुआ है। तो ये तो नहीं है कि मतलब इसके अलावा और डिजीजेस नहीं होते हैं, और ठीक है ये मान सकते हैं कि उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा था और कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो है उतना हाइक नहीं था। अभी कोविड-19 आ गया है तो सबका फोकस उस साइड आ गया है। इल्मुल अदविया में अगर आप देखें तो उसमें भी चाहे तो टॉनिक, हिपैटो प्रोटेक्टिव और वजल मुफासिल में या फिर इन सारी चीज़ों में मतलब उनका भी जो है एनसीडीज पे ही है। 34.09% जो है उन्होंने सिंगल ड्रग्स पे किया है और 47.72% जो है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स थे उनके। जराहत में अगर आप देखें तो 33.33% जो है वो कंपाउंड ड्रग्स पे था और 70% ह्यूमन ट्रायल्स हैं उनके। अमराज निस्मा भी है और जराहत में भी एनसीडीज पे काम हुआ है कि आप या फिर रीनल स्टोन्स पे। उसके अलावा अमराज निस्मा में देखें तो 31.03% जो है कंपाउंड ड्रग्स पे हुआ है और 100% ये जो है ह्यूमन ट्रायल है, जो कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स पे ज़्यादातर हुआ है काम। पीएसएम में है तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब में 11% थेरेपी पे हुआ है और 44% ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं। थेरेपी में भी वही जैसा कि मैंने बताया कि हिजामा पे ज़्यादा है, चाहे तो बिशुर्त या फिर बिलाशुर्त पे। और प्रीवैलेंस भी हुआ है इसमें, कैप भी हुआ है। प्रीवैलेंस में भी एनसीडीज़ का ही है कि हाइपरलिपिडमिया जाके देख रहे हैं आप, हॉस्पिटल बेस्ड है या फिर फील्ड बेस्ड है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस का प्रीवैलेंस देख रहे हैं। इलाज भी तदबीर में 60% थेरेपी बेस्ड है और 100% जो है वो ह्यूमन ट्रायल्स हैं। वो भी ज़्यादातर वो पेन को रिलीफ करने के लिए आप हिजामा कर रहे हैं बिशुर्त या बिलाशुर्त। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ऐसा नहीं है कि मतलब आप उस पे काम ही ना करें। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे है कि आप कॉज़ सेंट्रिक काम करें, हो क्यों रहा है, ये वाली चीज़ें। ये नहीं कि मतलब सिम्प्टोमेटिक कर रहे हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दे रहे हैं। तो हमारा जो ये है उसूल इलाज है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, वो सिम्पटम है। हम पे सिम्पटम के साथ-साथ हमें वो हो क्यों रहा है इस पे फ़ोकस करना पड़ेगा कि वो बीमारी हो क्यों रही है। उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स पे स्क्रीनिंग करें हम, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेज़ पे काम करें, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ करें। कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ पे जो है एक्यूट डिजीज़ेज़ जो हैं, उस पे हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडीज़ करनी चाहिए। अब ये है कि एक्यूट पे आपको कोई रिसर्च करने तो देगा नहीं उस टाइम। कोई आईसीयू में है, आप जा रहे हैं और जाके जो है आपने दवा को नहीं मुझे इससे करना है, वो तो करने देंगे नहीं। ठीक है, तो उस पे आप सेलुलर लेवल पे जाएँ और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएँ, इन सिलिको स्टडीज़ करें। एनवायरमेंटल में अगर देखें तो कॉज सेंट्रिक होना चाहिए, क्यों हो रहा है? जैसा कि मुझसे पहले डॉक्टर साहब ने बोला कि हवा में जो है वो आलूदगी होती है उसकी वजह से, तो उस पे हमें काम करना चाहिए। ये बात तो अतिब्बा ने पहले ही बता दिया ना, क्या हुआ, क्या है, नहीं है। उसके अलावा है कि इस पे मदर्स पे अनीमिया है, जैसे मोस्टली है कि जब भी हम प्रेग्नेंट लेडीज़ या लैक्टेटिंग वुमेन पे काम करते हैं या उनको दे रहे होते हैं कोई भी चीज़ दवा, तो हम 1000 बार सोचते हैं कि हम कितना दें, डोज़ क्या हो। लेकिन ये है कि हमारे अभी मैंने अनीमिया पे कुछ रिसर्च देखा, उसमें एक स्टडी मिली, वो भी बहुत कम इस पे था लोगों पे ट्रायल। ये है कि मतलब जब हम जिस चीज़ पे अनीमिया फोकस करता है फीमेल्स पे, ज़्यादातर फीमेल को अनीमिया होता है, वो भी प्रेगनेंसी में ज़्यादा। तो हमारे पास उसकी दवा ही नहीं है, क्या करें हम ऐसा? तो हमें चाहिए, ठीक है अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी मॉलिक्यूलर लेवल पे करें जाके। ये अद्विया वाले बताएंगे कि मतलब किस हिसाब से होना चाहिए इसमें स्टडी। बाकी इन सिलिको स्टडीज़ हैं जो भी प्रायर टू क्लिनिकल एंड एनिमल ट्रायल, जो भी सम्मी अद्विया है, दर्जा 3-4 के अद्विया हैं, आप उसको ह्यूमन पे नहीं दे सकते या एनिमल सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको जाके इन सिलिको स्टडी करें। बेसिक यूनानी डायग्नोस्टिक टूल्स पे करना है। अब ये है कि उसूल इलाज जो है वो फॉलो होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो बौलो बराज, नब्ज़ बौलो बराज की बात आती है। तो अब ये नहीं है कि हम पीछे चले जा रहे हैं उससे अगर हम डायग्नोस कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ नहीं है। नब्ज़ से पहले ज़माने में लोग सारी बीमारी बता देते थे कि हाँ, नब्ज़ देख के कि हाँ इसको ये चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाएँ और जाके जो है जो टेक्निक्स हैं अभी के, एक्स-रे ना कराएँ या फिर कुछ ना कराएँ, ठीक है? क्योंकि इस पे किसी को का कोई हक नहीं है।
जैसे कि कैथेटर है, उनका इजाद सबसे पहले इरासिस तरासिस ने किया था। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बस ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट यूनानी हो, हमारा उसूल इलाज पे फोकस करें हम, ये चीज़ें हैं। बाकी एप्लीकेशन ऑफ अदना से अशरा है, उन पे फोकस करें, मिजाज पे फोकस करें हम। इन पे जो ये पूरी स्टडी करते हुए मुझे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उसका यही था कि टाइटल का जैसे मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं था, लेस इंफॉर्मेटिव था कि जैसे तहकीकी मुताला करें। अब समझ नहीं आ रहा है कि बीइंग अ पीजी स्कॉलर तहकीकी मुताला क्या चीज़ है, ये ह्यूमन ट्रायल है, क्या है, किस तरह की स्टडी है, या फिर अननोन यूनानी फॉर्मुलेशन वाली चीज़, कम से कम आप ये तो मेंशन कर दें। ठीक है, ये पुरानी चीज़ें थी, और अभी वाला जो है अभी में थोड़ा सा मॉडिफाइड है और अच्छा है टाइटल। पुराने में था कि मतलब बुक भी नहीं है, कहाँ से आप नुस्खा ले रहे हैं, यूनानी फॉर्मुलेशन, कंपाउंड ड्रग्स, इस तरह की चीज़ें। बाकी है एनसीडीज पे जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का, जो मैंने बता दिया, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दे रहे हैं आप। उसके अलावा उसूल इलाज फॉलो नहीं किया, हम जो है कॉपी कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखें कि मॉडर्न में होता है, मॉडर्न में जो है वो हो रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भी वही चीज़ कर रहे हैं। हमारा उसूल इलाज तो अलग है ना। बस इतना ही कहना था। थैंक यू सर। GPCH गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना जी। क्या करिए? पीजी स्कॉलर हूँ सर, फर्स्ट ईयर। वाह, किस सब्जेक्ट में? मौलिजात। Is there any question? बोलिए जी। जी जी जी। नहीं, just a minute. I want the Professor Adam should be here in this conversation. जी जी जी। सर जो उनका, बोलिए। अभी होता है लीगल भी होता है, लीगल भी होता है, आप देखें नहीं, ठीक है, हम आपको क्या लर्न करना होगा, तो पूरा नाम ये हम साहब सर उसमें जो टाइटल है ना उससे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फोकस ऐसा हो कि टाइटल पे, जैसे ठीक है आप कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं होगा, ऐसा हो कि पीजी स्कॉलर फर्स्ट ईयर में जाके हमें पता नहीं है ना कि हमें किस पे करना है काम, रिसर्च गैप का पता चले, ऐसा टाइटल होना चाहिए। मैडम एक मिनट सुनिए, डॉक्टर साहब मैंने आपको प्लीज जानने को बताया है ये मैं बिल्कुल इनकी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद तो शी इज टू जूनियर, I don't want to comment actually, but I think what she has tried to present, this is just a mockery of the system. Who has allowed this type of talk? What she has presented? She has said that these studies have been done in ICUM on drugs without naming the formulations. First year student is saying like that without seeing anything. Are you aware? In Unani medicine, research is going on for the last 45 years. 50 years in AMU. Have you seen, tried to see any study? Have you seen the work done in NIU? We published the research work done in 5 years of NIU. Who says that the formulations have not been named? How can you dare to say that? It's not a joke. Sorry to say. Conclude your talk. Should not get authority. Who is your सर मैं कमेंट नहीं कर रही
नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, एक कभी नहीं चाहिए, मुझे पता क्या बोलना करेंगे, जो मरियम जमील First off, all staff, introduce yourself. अच्छे से करो। परेशान मत हो, तुम्हें भी डांटना। Go ahead. कौन सी वाली? Assalamu alaikum to all present here in this international conference on role of Unani Herbal drug in present health scenario and lifestyle disorder. I, Dr. Maryam Jamil, PG scholar of Toxicity department, am going to present my paper on present health scenario and potential of Unani system of medicine. Globally, there are many initiatives taken by various organizations like WHO's 13th General Program of Work, which primarily focuses to promote health, keep the world safe, and serve the vulnerable. इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये एक सिर्फ एग्जांपल है कि जो WHO ने प्रोग्राम किया है फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ। Now coming to my objective of my paper, which discusses the potential of Unani system of medicine in present health scenario in respect to both non-communicable diseases and communicable diseases. जब हम दोनों की अगर बात करें प्रेजेंट हेल्थ सिनेरियो की और इंडिया के बारे में बात करें तो CCRUM के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के फेवर में एक प्रोग्राम चला रहे हैं NPC, जिसको बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड इसके अंदर रिलेटेड हार्ट डिजीजेस भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये सिर्फ NCDs के प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है CCRUM के जरिए। इसी तरह के अभी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस आए कोविड-19, उस टाइम पे भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया CCRUM ने और बहुत सारी इसी तरह के गाइडलाइंस रिलीज किए हैं, जिसके अंदर हम प्रिवेंटिव मेजर किस तरह से कर सकते हैं या फिर यूनानी ड्रग्स हम कौन-कौन से ले सकते हैं फॉर इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स या फिर प्रिवेंटिव मेजर किस तरह से कर सकते हैं या फिर यूनानी ड्रग्स हम कौन-कौन से ले सकते हैं फॉर इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स या फिर हवा की आलूगी हो तो उस टाइम पे कौन-कौन से प्रिवेंटिव मेजर किए गए, हवा की आलूगी हो बहुत सारे पैम्फलेट्स और गाइडलाइंस मेजर्स किए गए, उसके ऊपर बहुत सारे पैम्फलेट्स। प्रेजेंट हेल्थ सिनेरियो की बात करें तो हम 2019 जब कम्युनिकेबल डिजीजेस कोविड-19 ये एक नहीं आया था, उसके पहले एक हमारे पास क्लियर डेटा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसके अंदर बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जो कि 71% डेथ जो होते थे उसमें 71% कॉजेज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का था, जिसके अंदर प्राइमरीली होता था कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज, ये सारे प्राइम फोकस रहते थे और इसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ्स बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन और कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से जो डेथ होती है वो 2009 और 13 का डेटा है कि 38 मिलियन केसेस पर ईयर होते थे और 48,000 डेथ्स पर ईयर होते थे। 2013 तक के डेटा है ये। और जैसे ही 2019 में ये कोविड-19 आया, कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से डेथ होने वाली जो सीक्वेंस थी उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया है, जिसके अंदर अभी तक 2 साल के बाद जब अभी टिल डेट अगर हम देखें तो 476 केसेस हुए हैं कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से और 6.1 मिलियन मोर्टेलिटी हुई है टिल डेट अब तक।
तो इस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं, और कोविड-19 की वजह से जो डेथ हुई है उसके अंदर भी हम प्रेजेंट हेल्थ सिनेरियो में सिर्फ कोविड-19 को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो डेथ हुई है उसमें भी सबसे ज्यादा अफेक्ट उन लोगों को हुआ है जो पहले से ही किसी ना किसी कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे, जो कि एनसीडीज की ही एक वो एनसीडीज की जो डिजीजेज हैं उसमें कोई ना कोई मुब्तला थे, उसकी वजह से डेथ ज्यादा हुए हैं। सीवियरिटी भी उन्हीं लोगों में ज्यादा देखी गई है और मोर्टेलिटी भी उन्हीं लोगों में ज्यादा देखी गई है। तो अगर हम प्रेजेंट हेल्थ सिनेरियो की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज भी उतना ही लाइफ थ्रेटनिंग है और कम्युनिकेबल डिजीज भी उतना ही लाइफ थ्रेटनिंग है। इसलिए इस टाइम पे हमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को चाहिए कि हम दोनों पे इक्वली फोकस करें, नॉन कम्युनिकेबल एज वेल एज कम्युनिकेबल डिजीजेस। कॉजेज की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के मॉडर्न कन्वेंशनल मेडिसिन में जो कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो है कॉज, मेन कॉज वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जिसके अंदर बोलते हैं उसकी वजह से होता है, जिसके अंदर इफेक्टिव इन्फेक्शियस एजेंट, सुटेबल ट्रांसमिशन, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, ससेप्टेबल होस्ट और एनवायरनमेंट, ये चारों फैक्टर मिलकर जब कंबाइन होकर एक डिजीज कॉज करते हैं और फिर वो कम्युनिकेबल डिजीज का एक मेन फैक्टर ये है, कॉज ये है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कॉज की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है वेब ऑफ कॉजेशन। इसकी थ्योरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्यों हो रही है उसकी थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा वो करती है, बता सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल फैक्टोरियल कॉजेशन की वजह से हो रही है या वेब कॉजेशन की वजह से हो रही है। और जब हम यूनानी कंसेप्ट में जाते हैं तो वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके कॉज नहीं बताता है कि डिजीज किस लिए हो रही है, वो नॉन कम्युनिकेबल हो या कम्युनिकेबल डिजीज हो, दोनों हमारे टेम्परामेंट की वजह से, टेम्परामेंट को इसको कॉज बताया गया है, चाहे वो टेम्परामेंट इंडिविजुअल को हो चाहे आउटसाइड इंडिविजुअल हो। वीकनेस ऑफ तबियत या फिर इम्यूनिटी को बताया गया है और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कॉजेस को बताया गया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि तबियत क्या है। कि तबियत एक सम ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जिसके अंदर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मतलब एक हम तबियत की जब हम बात करते हैं तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एक चीज वो कौन इस चीज को गवर्न करता है, तो तबियत है जो गवर्न करती है। और यही तबियत हमारे बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का भी काम करती है और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। तो दोनों मतलब पूरे दोनों इम्यूनिटी और फर्स्ट लाइन डिफेंस मिलके जो हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करती है, जो वो चीज जो होती है वो तबियत होती है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की बात करें तो इस टाइम पे हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वही ज्यादा इस कोविड-19 की वजह से कम अफेक्ट हुआ है। और कुछ ये जो यूनानी मेडिसिन जिसके ऊपर प्रूवन इफेक्ट भी हैं और हमारे अतिबाओं ने मेंशन किया है, वो कुछ ड्रग्स ये हैं, लहसुन, कलौंजी, फिलफिल्स या शहद, इसी तरह से और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। पूरी टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा ही मैंने एग्जांपल लिया इसके अंदर कि कुछ रिसर्च्ड मेडिसिन लिए हैं जो कि यूनानी मेडिसिन, जो कि प्रेजेंट हेल्थ सिनेरियो एनसीडीज और सीरीज में इफेक्टिव हैं। कम्युनिकेबल डिजीज में जो कि कोविड-19 और फ्लू लाइक डिजीजेस के लिए जिसका प्रूवन इफेक्ट है वो है तिर्याक अरबा, तिर्याक नज़ला, तिर्याक वबाई, जोशानदा नज़ला, अर्क़या जीब और टैब यूविड, जिसके अंदर कलौंजी, बाबूना और शहद एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर एक कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक ही मैंने ये ट्यूबरकुलोसिस लिया है कि जिसके अंदर दो हैं, कुर्से, सरताने काफूरी और बार्ले वाटर। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा ड्रग्स नहीं है प्रूवन और या फिर इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीजेस पे काम नहीं हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले रही हूँ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए डायबिटीज में कुछ दो ये हैं कि तुख्म हयात, सफूफे ज़ियाबतीज़, हाइपरटेंशन के लिए असरोल, कुर्से दवाओ शिफा, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के लिए सूरंजान, हुलबा, माइग्रेन के लिए खमीरा गाउज़बा और माजून अंबरी। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जो कि प्रूवन इफेक्ट रखते हैं, उसके अंदर एक आता है खमीरा मरवारीद। मुरब्बाजात, जितने भी मुरब्बा हैं वो सब अच्छे इम्यूनोमॉड्यूलेटर हैं, इम्यूनिटी को इन्हांस भी करते हैं। कुश्तेजात जितनी भी हैं, मैक्सिमम कुश्तेजात है उसके अंदर जिंक प्रेजेंट होता है। इस टाइम पे हमने देखा है कि जिंक टैबलेट कितना दिया गया है कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हमारे पास जितने भी कुश्तेजात हैं उस सब के अंदर जिंक प्रेजेंट कहीं ना कहीं अच्छी खासी क्वांटिटी में रहता है, तो हम इसको एज अ प्रिवेंटिव दे सकते हैं और इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए। एक इसके अंदर एंटीडोट्स और तिर्याकात जितने हैं वो तो हैं ही, जिसके ऊपर काम मैंने कोविड-19 वाले में मैंने बताया, जितने भी तिर्याकात हैं उसके ऊपर काम हो चुका है। और आयुष काढ़ा जिसको बांटने के लिए बहुत सारे, मतलब आयुष ने बहुत सपोर्ट किया है लोगों तक पहुंचाने के लिए, और इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है कि हम कैसे कोविड-19 को प्रिवेंट कर सकते हैं, लोगों की इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकते हैं, उसमें आयुष काढ़े का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हम जब यूनानी मेडिसिन के पोटेंसी की बात करते हैं तो यूनानी मेडिसिन की पोटेंसी तब उभर के आती है जब हम ये देखते हैं कि वो किस तरह से बाकी सिस्टम से ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम इस टाइम पे अगर हम करें तो इसके पहले मैं आपको एक तरफ लेके जाना चाहती हूँ कि आजकल ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस की एक अलग लिस्ट बन चुकी है कन्वेंशनल मेडिसिन में, जो कि जितने भी केमिकल बेस्ड
डिजीजेज हैं, केमिकल बेस्ड मेडिसिन हैं, उसको लेने की वजह से एक पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है जो कि ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेज हैं। तो हम एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए केमिकल बेस्ड तो हम देते हैं जो कि टारगेटेड काम करता है, लेकिन उसकी वजह से एक अलग डिजीज पैदा हो जाती है और वो कहीं ना कहीं बहुत ही सीवियर हार्मफुल इफेक्ट भी रखती है। इसके अंदर जो कुछ इफेक्ट्स जैसे हैं कि जैसे ड्रग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर हम देखें तो एनसेड्स हैं, ये स्टमक अल्सर्स बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करें तो स्टमक अल्सर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ये। इसी तरह से जैसे ये पैराजिनामाइड है, लिवर डैमेज करता है। और इसी तरह अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग इफेक्ट्स हैं और हर एक सिस्टम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो या फिर कार्डियक इलनेस हो या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स हो। और वहीं अगर हम बेनिफिट्स ऑफ यूनानी मेडिसिन और इफेक्ट्स हम देखें तो वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल होता है। इजी अवेलेबल हम इस सेंस में बोल सकते हैं कि हर्ब्स को हम डायरेक्ट घर में भी कर सकते हैं। जो भी लोकल हर्ब्स हैं, इसके बहुत सारे बदल भी प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से हमने बोला कि इजी अवेलेबल है और हर घर में पहुंच सकता है। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, जैसा साइड इफेक्ट्स अभी हमने बताया उस तरह के अभी तक कोई यूनानी मेडिसिन में इस तरह के कोई भी सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं हुए अभी तक रिपोर्ट। सेफ है और इजी और होमली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और इसका कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू एज, टेम्परामेंट और डोज के अकॉर्डिंग भी हम इसका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर हम बच्चे को देना चाह रहे हैं तो डोज कम करके दें या फिर उसके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग दें, और फिर टेम्परामेंट अगर चेंज हो जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम दवाओं में 1 या 2 दवा को ऐड या रिमूव करके भी उसका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जब कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं अपने इस पेपर की, तो उसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन डजंट हैव इल इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स होलिस्टिक अप्रोच एंड नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग्स। यूनानी ड्रग्स आर सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव, इजी अवेलेबल, मॉडिफिएबल एंड एविडेंस बेस्ड। इस टाइम पे इस एरा पे एंड टू एनलिस्ट रिसर्च, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ यूनानी ड्रग्स is the core team of my research and these are my references. Thank you. Good question. जी सर। सर मोस्टली उससे ज्यादा सर पेपर है इसके अंदर। सर अभी मेरे पास मतलब वो नहीं है, इसमें किसी में होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। सर मैंने लिखा है सर मोस्टली कुछ तजात। सर अभी बहुत टाइम लगेगा। जी सर। Unani medicine is economic. Is it true? सर मेरे हिसाब से तो नहीं है। सर डोजेस भी ज्यादा होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी देना होता है तो सर, लेकिन सर आवाज नहीं आ रही आपको। साइड इफेक्ट नहीं है सर, सीवियर साइड इफेक्ट मैंने बोला, साइड इफेक्ट नहीं बोला। सीवियर ऐसा नहीं है जैसे कि स्टमक अल्सर वगैरह कोई प्रोड्यूस करे या फिर कुछ और। सर इसका नहीं, अभी तक तो मतलब मैंने नहीं देखा है कि इसका कोई पर्टिकुलर इस बेसिस पे कोई डेटा हो, लेकिन जितने अगर मैं ड्रग्स वगैरह ढूंढती हूँ या फिर पेपर वगैरह मैंने देखा है जितने भी मतलब अब तक, उतने में मुझे साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं दिखे हैं ज़्यादा। क्योंकि जी सर जी सर इसका एक भी ये भी तो हो सकता है कि हम होल प्लांट यूज करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि साइड इफेक्ट कम हो। हाँ थैंक यू सर।
Dr. Mohammed Yasin. Still have my so thank you very much. Thank you all. Thank you, the organizers. Thanks. So for next session, I think the organizers will be there. There is a Thank you, the delegates and the listener of this international seminar. After the lunch, may I request you all to please gather here again at 2:30. So we will be starting the presentation from the experts as well as some of the foreign experts. Claudia, she'll be presenting keynote address in that session. So kindly come back after taking the lunch. Thank you very much. अर्जेंट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो ना रिकॉर्डिंग अभी वो भी बंद कर दो प्लीज एवरीवन कर दो बंद कर दो रिकॉर्डिंग बंद कर दो